Very good afternoon to everyone. Welcome you to this CA exams organized by Board of Studies for Final Paper 4, Direct Tax Laws and International Taxation. And for the students who are going to appear for May 26 examination. Hope you all are doing well and must be busy with your preparations, and since your examinations are approaching very fast for May 26, now you are in April, mid of April, and your examinations is going to start in first week of this May. This paper, direct tax laws, of course, nowadays, if we say it becoming so much of a scoring, and it's something, which is very practical and has a great relevance when you become a chartered accountant. So don't take it just to crack the this paper or just to pass in this paper. Try to attain a conceptual clarity so that once you become, a chartered accountant, you all are FCS, future chartered accountants. So when you go into practice, and just keep open this subject as a limb for your practicing, and it has a huge scope where you really can do wonders when you have attained clarity or analytical skills over the subject. It is a huge opportunities. So read this subject just not as a subject. Read this subject as you are doing it in practice. You all have done your articleships, so you all know how to apply the provisions and how to analyze the things, how to interpret, how to these case laws are relevant for you. And while doing your deciding something, while computing your total income, while facing the appeals before the tribunals, or while making the memorandum of cross objections and all those things, everything has a practical relevance. And international taxation, of course, in itself has a huge relevance. For if you talk about May 26 examination, see, practically, if you say me, the new Income Tax Act 2025 already been made effective from 1st April 26. But for May 26, since you don't have that much of time to go and read your new act, at presently for May examination as well as for November examination, the act that is 1961 is only relevant for you, and that too as amended by Finance Act 25, not Finance Act 26. And this I am telling you, students, why? Because if you see, those students, basically those who are going to first time appear for the this exam May 26, they don't have problem because they must be having the new study materials. Just a minute. They must be having the new study material, and they are aware of the new amendments which are applicable for May 26 examination. But for those students who have attempted January 26 examination or the examination prior to it, are for them it is very, very necessary that if you are studying from your existing study material, then really it is needed that you should be updated with the amendments which are relevant for AY 26-27 and made by the Finance Act 2025. Okay, so if you have studied from the old study material or the old publications, whatever, then it is very essential then upgrade or update your knowledge with the amendments made by the Finance Act 25. It is very, very essential, because sometimes it happens we know certain things, we are very well confident that we are having we know the subject, but it sometimes happens that you are not aware of the certain things which are being amended by the latest Finance Act. So for that, students, please always be advised to purchase the new act specifically for the attempt which is May 26 May examinations onwards. Take a new study material. If you have not, then please go through the latest amendments which are made by Finance Act 25. These amendments are available because the students keep on asking how to again go through whole study material and get to know what are the amendments applicable for a particular examination. For those students, if you have, just go through the portal. Okay, let me show you.
It's very necessary because just a minute. If you have gone through our institute's portal, there you will find the study material, okay? And in that study material, under the new schemes of education training, in the study material, which is relevant for May 26 examination and onwards, for May exams, and now exams are going to happen twice only, and from May attempt and then the November attempt. So for those students, they have to just go to this study material, and you will find in the initial pages, the overview of these amendments is given. Overview of these amendments are given in the initial pages. Go through these amendments, carefully go through these amendments. But of course, since you are studying from the old study materials, then you yourself have to update the questions which are affected by way of these amendments, right? Otherwise, take the new study material basically, or take the purchase that one only. So here we are given the overview of the significant amendments. So go through these carefully, and even if you have done your studies from the study material and you are going to appear for the examination, so this content, this amendments which is giving you summary of the amendments, is very essential. Go through these again so that you should not miss out anything, because it happens in the May attempt specifically when it changes to the new Act, Finance Act. Certain questions are being based on the new amendments. So go through it. For example, if you see the default tax regime, the slab rates in the default tax regime have undergone change. You have to remember, of course, these rates and the slabs also. And while doing, specifically while doing this default tax regime is affected, is important for you to do your non-resident taxation provisions or the double taxation relief, or some case scenario can also be developed based on this default tax regime. So this is one of the amendments. There are certain amendments are given rebate. Of course, rebate is one very, very important thing, that under the default tax regime, rebate is being increased from the total income where the to 12 lakhs, for 7 lakhs to 12 lakhs, and the rebate amount consequently being increased from 25,000 to 60,000 now. Okay, and then this is important. All the amendments briefing is given here, so please go through this, download it if you have not done it, and before the day of your examination, go through, just revise it again when you are doing for your appearing for your exams. So these amendments you will get there. And the study material, if you talk about the study material which is relevant for May 26, is September 25 edition is relevant for you. September 25 edition is relevant for you. And then your the cutoff date, because it's amendment based paper, the cutoff date for you is for notifications and circulars, the cutoff date is your 31st of October, prior to 6 months of your examination is the cutoff date for the latest amendments. So Finance Act, new Finance Act, that is Finance Act 25 is applicable. And then apart from that, notification circulars. What happens now? The students keep on asking whether there is any stat update for May 26 examination. Dear students, whatever be the notifications or circulars are there which are relevant for May 26 examination are already covered in this study material. You just go through the study material. The amended portion is given in bold and italics. So please go through that one for understanding what are the relevant. And apart from that, after this 31st of August, there are no significant things which are being brought out for covering and making your stat updates. So at presently for May 26 examination, there are no stat updates which are there for May 26 examination. Okay, then your judicial update. Of course, judicial update is very, very significant, very important for you. And see, only based on the significant case law, it's not necessary that a descriptive question can only be asked from this significant case laws. Question may be asked in the form of your MCQs, or they may be tested in the case scenario based MCQs or in independent MCQs. So, or a full-fledged descriptive question can be asked, or some adjustments in first of the question can be asked from this judicial update. Apart from the judicial update, because if you see the from module 1 to module 3, the significant select cases of the High Court ruling and the Supreme Court ruling are covered in that portion. The significant select cases, it covers the rulings of High Court and the Supreme Court, and those which are not covered in that study material, we have given by way of
judicial update, which is relevant for May 26 examination. For November exams, again, we will come out with the judicial update. And if there are certain amendments or by way of notifications are there or the circulars are there, we will come out with the judicial start update in case needed. Then study material, once you're done with the study material and your judicial update, then the case scenario booklet, of course, you have to simultaneously do this case scenario booklet along with your study material portion. Because of course, once you have done it, because it is not going to, you cannot answer it independently. It's not based on a particular chapter. This is an integration of two provisions which are contained in different chapters. So it's once you have done your study material, now it's time. Definitely you have done your study material, you have attempted, it's your third time revision. So in case if you're feeling you are not able to attempt the MCQ segments still, then better to do again this case scenario booklet, because 30 marks are such now where you have a huge scope to score good marks, full marks. Because there you need not to give the full proper presentations. You just solve the questions by answering it in your rough notebook. Of course, you have to solve if it's the calculation problems, then definitely you please solve it with the proper steps in a space which you have allocated for the making the calculation. Rough notes, you can specify it as a rough notes, and then you can make your calculation for the purpose of computing the calculations portions, right? So case scenario booklet and the RTP, we have come out with the latest RTP for May 26 examination. In case students who are, because you want to practice more and more, and you go back to the old versions of the RTPs or old versions of the mock test papers, then definitely it's very essential for you to please refer these old or earlier materials along with the latest amendments which are relevant for a particular examination. Okay, otherwise you will get confused. So the RTP, do the RTP which is available for May 26 examination. Then 2 series of mock test papers already being conducted. They are available on the portal. So those who have got the chance to go to the branches and attempt those mock test papers is well and good. If you have not, then you can download it from the portal and you can solve it, and taking a 3 hours time, 15 minutes time for reading and then 3 hours time for solving the paper. And of course, please make sure that you are utilizing only this 3 hours time and doing the paper only in examination conditions. Okay? So it will help you to manage your time during the examination. How can you manage the time during the examinations? Or just you will able to know where you are going wrong. You will you can assess your preparedness for the examination basically, and you have some time. So in that time you can just focus on those areas where you feel you have need more practice, so you can go and practice those areas. Then saransh is something which is giving you summary form, or you can say it's a notes kind of thing. So it's available, latest updated saransh is available on the portal. Please go through the latest one, and this is definitely going to help you in revising the things before the examinations. So once you are appearing for the mock test papers, for example, you plan that I have allocated this day for appearing for the mock test paper for direct access paper. So what you can do, you just revise the things with the help of your notes if you have done, or with the help of the highlighted portions where you feel these are the areas which need improvements. So go through those concern areas and again revise those things, then do and solve your mock test papers. Okay, Saransh is wonderful publication. Of course, it will help you out to revise the things before the day of your examination. So these are the resources which are available with you. You can just go through these resources. In case if you have any doubt relating to this, you can ask us. Students have joined. Anyone who wants to ask, you just please raise your hand relating to whatever we have covered, so we can answer you. And just raise your hand and you can unmute yourself. I can ask you to unmute. In case, if you're clear, then we can move ahead. So no doubt, everything is clear. Good, it's nothing, because I just haven't want to ask something. Just a minute, let me chat pe. Yeah, please ask me your query if you have. Hello, good afternoon, ma'am. Yeah, please.
Nurpaint. My query is regarding IBS. Can we carry old module which was applicable for January 26 for the May 26 exam for DT and IDT, or we need to again reorder the new modules? Only you are going to appear for IBS exams? Ma'am, I'm appearing for Group 2, but I have the older modules. But frankly speaking, for IBS also the latest amendments only are relevant for you, and you are preparing for your direct taxes also from the old versions, and for your indirect taxes also for the old versions. Then you are reading it along with your amendments portion, right? Yes, So you ma'am. can carry. Then Covering. of course you can, if actually we always advise for the May attempt students. Now the latest, the year starts from the examination starts first time in the May month, right? So for those students, there is a shift from the assessment years amendments and the Finance Act amendments. We always advise them to purchase a new one. Otherwise, there are certain small things which you really skip it, when you are preparing it, because you yourself have to update everything, right? It whether by way of relevant case laws ho, ya fir it's by way of notification, certain things are changed, so we always advise to purchase. But since you are saying that you have prepared and you are able to solve the questions also, are you able to solve the questions from MTP? Yes, ma'am. You know the amendments and everything, so Yes, you ma'am. don't I've covered the amendment. then you can carry that. Okay, ma'am. Because you have highlighted, definitely you have updated yourself in the study material, that you can carry you with your notes and everything, na? Okay, ma'am. That you can carry. Thank you, ma'am. Anything? Yeah. So let's move ahead. This is manner of assessment. You all must be knowing what is the manner of assessment. The 30% is case scenario based, 70% descriptive portion. Of course, in MCQ segment, you need not to give any kind of reasonings. That's plus point, and there is no negative marking, first of all. So please attempt all the MCQs. ठीक है? Attempt all the MCQs very carefully. It's not कि आपको attempt करना है, जो नहीं आता उसको भी attempt करना है. ठीक है? Try to attempt it. Don't leave anything, because there is no negative marking for it, and you need not to substantiate the things with the proper reasoning likewise in your descriptive portion. Descriptive portions requires you to attempt the things in a proper order with proper provisions. Only then you will get the marks. Your presentation should be very neat and clean, and it's easy for the examiner to understand what you want to say. Actually, it should be as per the requirement of the question. Whereas in MCQ segment, of course, if you see the last attempt MCQ segment, many things are being picked up from the case scenario booklet. If you have gone through and match the case scenario booklet and the MCQs, and it's so surprising for me that students are not aware that these are being covered in our case scenario booklet. It's so surprising for me. And please go through the case scenario booklet is available, okay? And whatever the RTPs are there, certain things are picked up from there. Even from study material also certain things are picked up. If you see the case laws, basically these case laws questions are being based on the select cases which are given in your study material, or the judicial update case laws. Okay, so the earlier, so old judicial updates things you need not to go through the earlier ones. Everything we have covered in our study material now. The latest one only, that is for May 26 examination, that you please go through. There are only 4 case laws. Some are Supreme Court rulings and some are High Court ruling, and they are very relevant for you. And if you have gone through your RTP, we try to give you the based on one of the ruling, we try to test you through MCQ, so that you can please attempt your RTP also. If you have done once, do it again. Okay, and of course for practicing purpose you can refer the old one also, but you have to update them. That's only my concern, that you have to keep the amendments basically. So for MCQ segment, what is happening now, though there is very scoring paper, if you know the highest mark in the direct taxes is 95. Okay, and it's really in direct taxes, if your person is getting 95 marks, so you can see how scoring it is now. And it's up to you how you are presenting your answers. Because when a student comes to BoS, then they just show their answer sheets, and I found that they know the concepts, they know the provisions, but they are not able to present it. They are not able to
first of all, if you find something new, there is a new question which you are not familiar with, and now you first of all, at the initial stage, what is the challenge before you, that you are not able to understand how to start with the provision, how to start with the answer, how to approach presenting your answers. That's a main problem with the students, actually, with the student, everybody. So it's always better in that case, if you are something unfamiliar with, you are not knowing the familiar with the question I'm telling you, but of course you don't have any scope to be unaware of the provisions. So if you have studied well and you have practiced whatever the RTPs are given to you, case scenario booklet is given to you, the study material given to you, so when you are doing it, so if it's something new and you know the provision, so first write the provisions briefing कि this provision is applicable to the point. It's not कि आप पूरा provisions लिख दो as it is. If you are remembering the provision, you are writing everything. No, don't waste time in that. You just see, read the question carefully, understand the requirement of the question carefully, then start approaching your answer. Okay. Provision से start करो, then थोड़ा analysis होगा उसमें. It's not necessary that you are going to write in that manner, because in case laws question you are asked, definitely nowadays the question itself contains the requirement that you have to answer the case law based question by covering the issue, by provision applicable, by analysis and conclusion. But the same strategy, if I say, is applicable for other questions also. If it's not a full-fledged computation problem, there you have to just understand the requirement कि क्वेश्चन की requirement क्या है, what all provisions are applicable. So आप थोड़ा brief करोगे इस provision के base पे, if it is required depending on the marks also, उस provision को apply करते हुए उस on the facts, then you start your question. Then definitely after doing the analysis, after applying the provision, you have to conclude it, right? Conclusion is very essential. You have to conclude it. Conclusion, if we say, what is the conclusion? If the question is asking you to compute the TDS liability, then the conclusion is to compute the TDS liability. Okay, it should not end with the just explaining the provision and applying it. You have to conclude by computing the tax liability. It depends ki kya requirement hai. Okay. For example, if we have gone through the January 26 attempt examination, there is a question on tax audit, and it's a new frame question, and it's very good question. If I say, they are testing about not only the tax audit report, definitely you have to 43BH is one of the requirement where the payment is to be made to the micro and the medium and the small enterprises in a very within the time frame. Okay, MSME में micro and small enterprise within a specified time limit. And if you have not done the payment, then you will not be eligible for interest deduction, and actual payment is not made in this year within the time period, then you will not be allowed as a deduction. Okay, this is the provision itself says, but interest ki deduction will not be available. It is written in the MSME Act. It's not written in the Income Tax Act. So those who have gone through the tax audit chapter, there you will able to catch this point. So यहाँ पे they are not just asking you to compute the disallowances attracted under section 43BH, but they are asking you to determine first whether the enterprises with which the transactions are happening and the payments are made to those enterprises are falling within small enterprise or the micro enterprise. This is the first requirement. For that purpose, question is not directly telling you anything. They have just given you the facts and just given you the investments in the plant and machineries. Then they have given you the turnover of those enterprises. Now, first step is to determine those. Then only the 43BH will be applicable. Then you will go to write the 43BH. Then you are going to write that it's required. If the payment is not made within the time frame and to the MSMEs, then you are required to report in the tax audit. So you have to understand the requirement of the question. For example, advance ruling. आपने देखा होगा every time in the advance ruling, very familiar questions you will find. Ki, if you are aggrieved by the advance ruling order, can you go? There is any remedy available with you? This is the question. Or of course, High Court ke paas you can go and approach to the High Court directly, because it's not tribunal. Tribunal pe you cannot go and do the if you are aggrieved to make your application, you have to go to the High Court. Or then they will ask you something very familiar. So this time they have tested you who can be the applicant for the purpose of filing an application for advance ruling. So here it is very essential for you
कि आपने एप्लीकेंट की डेफिनेशन को भी ढंग से ठीक से यू हैव ग्रैब थ्रू द एप्लीकेशन दिस एप्लीकेंट डेफिनेशन, ठीक है। तो इफ यू हैव डन द एडवांस रूलिंग, आपने एप्लीकेंट भी समझा है, यू अंडरस्टैंड द टर्म एप्लीकेंट आल्सो, देन यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड आंसर इट, एंड टू द पॉइंट यू कैन आंसर इट, यू हैव टू आंसर टू द पॉइंट ओनली। एंड वन मोर थिंग कि स्टूडेंट्स को आप करते हो अपनी प्रेजेंटेशन, व्हेन यू प्रेजेंट योर आंसर ना, if you feel that this is the very relevant point, which is the basis to arrive at a particular analysis and to arrive at a particular conclusion, highlight that, properly highlight that with your pen. Don't use different color pen or different pencil something. I think this you are not allowed to do that. You have to use own pen, just underline it, okay, so that jab examiner, when the examiner is just checking your copies, he need not to read through everything whatever you have written. He just at glance he will come to know that this is the point, and student aware about it, and you will definitely get a marks based on your highlighted portion. Okay, so this is the approach. Descriptive ka whatever be the MTPs, if you see, a lot of for we give the substantiate the things with the detailed reasonings, but if you going to appear and writing in your examination time, you don't have that much of time, definitely you don't have that much of time, so you have to write to the point only. आपको देखना है कि what the question is asking you and how you are, what is the requirement and what is the basis for arriving at a particular analysis and the conclusion, that only you have to write it. For example, there is a disallowance on account of non-deduction of TDS. Okay, there is a disallowance. This question is asking for disallowances, and the question is asking for a disallowance on a payment on which tax is not deducted, which is made to a non-resident. Okay, अब non-resident का जैसे क्वेश्चन आया, क्वेश्चन में लिखा है no TDS is being deducted, आपने सीधे से 100% के disallowance you have done, because it's 100% disallowance is attracted, whereas in case of residents 30% of expenditure is attracted. So what happens? But first stage mein, on that payment itself, that is not taxable in the hands of the non-resident. Okay, and you just hurry bari mein just write down that 100% disallowances are attracted and all. First stage mein, that itself is not taxable, because for deducting a TDS on a payment which is made to a non-resident, you first require to know about whether the amount is chargeable to tax in India or not. Okay, 195 starts with that only, where if the sum is chargeable to tax in India. For sum chargeable to tax in India, you again have to go to the section 9 and and then link the payment, what is the nature of the payment and what are the conditions accordingly that income is taxable in his hands. Then only you apply the disallowance provisions, and that is required. You have to mention that the sum is not chargeable to tax in India, so no disallowance is attracted. That's enough. Okay, so no disallowance is attracted. यहाँ पे आपको इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है. You need not to write so much कि 195 says this, 195. No, you just have to write कि this payment on is not chargeable to tax in India. Okay, by virtue of this section, if you are remembering the section number, then it's well and good. If you are not remembering the section number, don't write a wrong sections. Definitely don't write a wrong sections. Okay, write it and very briefly you just sum up your conclusions. So this is very much required for the descriptive segment. MCQ segment में there is a problem क्या होती है कि you missed some of the point and the questions are very closely related कि it is possible for you, and paper setter also knows कि this is a possibility where a student can go wrong. In that manner the options are being given. Okay, and it's possible if you also miss that point, then it's possible that you just choose that option only. So you have to be very careful. Keep in mind certain information which are hidden in the facts, and definitely they are not clearly being asked you to apply on. For example, surcharge, if you see the AMT provisions, if you see and then your other certain aspects which are not clearly being given in your facts or something in the that is possible you to miss on. So वो वाली चीजें आपको बहुत carefully ध्यान से you have to read the facts and just give a thought कि what all things can be applicable. ठीक है? Of course, surcharge only you will come to know once you have computed the total income. Then only you will come to know what would be the applicable surcharge rate.
Okay, rebate, of course, rebate is something which you can miss on. And then surcharge in case of 115, BAA and BAB is 10%. It is irrespective of the total income. That kind of question can be asked. So anything which is, not clearly being written in your questions as the requirement, but they are being tested in your question, MCQ segment. So on that, you have to be very, alert, and in alert mind, and then choose the correct options. This is absolutely very necessary for examination point of view. So if you see in the MCQ segment, everybody must be knowing ki it's a straightforward strategy. Every time the paper, 70 marks paper and 6 questions are there. First question is compulsory question, and the remaining from last 5 questions, you have to attempt only 4 questions. Okay, and one internal choice is there. So this choice thing, when you have to do this choice thing, definitely you have to do at the time when you have given the 15 minutes reading time. ठीक है, don't waste any time while doing the choice तो आप कर लो, just go through. आपको 70 मार्क्स का पेपर पढ़ना है, 70 नहीं 84 मार्क्स का पेपर पढ़ना है, it would be 84 मार्क्स पेपर. उसमें से फर्स्ट तो छोड़ दो, फर्स्ट को अभी रीड नहीं करेंगे आप, लास्ट के 5 क्वेश्चंस को रीड करेंगे, उसमें से अपनी चॉइस कर लेंगे एंड डू मेक अ चॉइस ड्यूरिंग दैट टाइम. ठीक है, इन केस आपको लग रहा है रीड ऑल दी पार्ट्स ऑल्सो, ऐसा ना हो कि आपने एक चॉइस कर लिया, उसके 2 पार्ट्स तो आपको आते ही नहीं है, सिर्फ एक ही पार्ट आता है उसका. इस तरीके चॉइस नहीं करना है. इफ यू नो एटलीस्ट 2 or 3 पार्ट्स इन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, दैट यू प्लीज मेक इट एज अ चॉइस, राइट. अदरवाइज इट्स 14 मार्क्स. 14 मार्क्स में से आपको देखना है कि आपको 4 मार्क्स का आता है, 6 मार्क्स का आता है, उसके अकॉर्डिंगली यू मेक अ चॉइस एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्रोसीड विद द question paper. And then which you have to do first, MCQ segment or the descriptive segment? If frankly speaking, it's a person to person's call कि whichever you want कि मेरे को MCQ करना है तो you do MCQs. होता है ना कि sometimes आपको लिखना नहीं है अभी आपको, because लिखने में sometimes it happens कि आपको ज्यादा टाइम लग जाता है. कुछ क्वेश्चंस में you definitely you tend to spend more time, so better to do MCQ segment fast. And of course you have to allocate the time, and if you see 30%, it comes to 180 ka 30% if you take, then it's 54 minutes, and 54 minutes में don't give 54 minutes. 54 minutes are too huge. डिस्क्रिप्टिव पॉसिबल ही नहीं होगा आपके लिए कंप्लीट करना, तो बेटर है कि आप इसको 40 to 45 मिनट्स रखो. ठीक है, ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी रीड करना है और आंसर दिख रहे हैं फटाफट और टिक करना है. नो, गिव इट अ चांस. एक बार आपको देखना, अगर 30 मिनट्स है, 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है, तो एटलीस्ट आपको, मैंने बोला 30 मिनट्स, 15 क्वेश्चंस विल बी देयर, सो 2 to 3 मिनट्स, एटलीस्ट 3 to 4 मिनट्स आप दे सकते हो. ठीक है, 48 होता है, तो आप 3 मिनट्स आप रखिए, 45 मिनट्स में आपके 15 क्वेश्चंस हो जाएंगे. एक क्वेश्चन को अगर आप 3 मिनट्स रखते हो. अब केस सिनेरियो पहले से शुरू कर देंगे पढ़ना, या पहले एमसीक्यू शुरू करेंगे? पहले आप एक बार केस सिनेरियो को जरूर पढ़ना, बिकॉज ये स्ट्रेटेजी होती है कि आप फर्स्ट यू स्टार्ट रीडिंग योर एमसीक्यूज इनिशियली एंड देन गो टू द फैक्ट्स. देन व्हाट हैपेंस ना, इट इज पॉसिबल, क्योंकि आपने पूरा फैक्ट्स अभी पढ़े नहीं है, यू हैव नॉट रेड द फैक्ट्स. ठीक है, उसमें हो सकता है कि उससे रिलेटेड जो फैक्ट है, आपने एक पर्सन चूज किया कि एक पर्सन है, this is the person, and you just go and look for his information in the case scenario. What happens now, it's possible कि उसकी information, some information can be given scattered. Okay, in that case you can miss the information. So it's better एक just थोड़ा रीडिंग दे दो उसको, थोड़ा आइडिया रहेगा माइंड में कि इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी दी हुई है, एंड दैट इज अ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल, it's written ki assessee is not paying taxes for the default tax regime. This information is given at the end में, वो आपने देखी ही नहीं, उसके बारे में लिखा हुआ छोटा सा कि इट्स पेइंग टैक्स अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम. तो इट्स बेटर कि एक बार जस्ट रीड कर लो, उसके बाद फिर अच्छे से एमसीक्यू को पढ़ो, फिर से फैक्ट्स पे जाओ. ओके, एंड लुक फॉर द इंफॉर्मेशन व्हिच आर रिक्वायर्ड टू आंसर दैट क्वेश्चन. एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में आपने चॉइस कर लिया, मेक इट श्योर कि all the parts of a MCQ descriptive question, all the sub parts of the descriptive question should be solved in continuation. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने you have just done question number 2A at one place and question number 2B after question number 6. Don't do in that way. You will not be getting any marks for that another parts of question number 2. So it's better to solve it in continuation, in sequence only. If you are not knowing the question or sub part of it and you feel कि नहीं मेरे को पहले other parts कर लेने चाहिए, then I will come again to this part to leave a space, and at the end if still you are not able to proceed with that sub part, then just strike out it, okay, and clearly just cross it and just write please turn on for another answer.
Okay, it's very essential. These are small points, but definitely it will it's required for you. This all do's and don'ts का I will again take it up, and first let me now go you through कि आपको क्या strategies रखनी है अपने revision जब आप कर रहे हो, तो how you can strategize your things to score good marks in DT. Roshni wants to ask something. Roshni, you can unmute yourself. Roshni. Roshni, please ask your query. You are unmuted, Roshni. You can ask your query. If you are not, please write through chat. If you are not able to unmute, or you are not, your speaker is not working, or some other problem, please write through chat. I will see your query there. So, what is strategy you can use for this paper? Because it's revision time, okay, and you have done your studies. So, it's really section-wise weightages matters for direct tax papers. It really matters for you, and you have to make your strategy as per these weightages. Really, it will help you. Definitely, ऐसा नहीं है कि आपको जो भी questions you will get, every question will be familiar to you. It's not going to happen every time, and it's not going to happen for each questions, because there must be some questions you will feel कि नहीं, these are we have done it, and we have already familiar with these kinds of problems through the study material are covered, or some of the questions are there in the case scenario booklet. So it's possible, but definitely how you can make a study plan, because it's a revisionary time, right? And for you, if I say there are 3 sections, okay, and whole of the direct taxes and international taxation subject is divided into 3 parts. If I say substantive provisions, and then your procedural aspects, and then your third portion is the international taxation, having a huge broad sections, of course, but in it itself, if you see the paper pattern over the last few attempts, then you will notice कि आपको 30 to 35% for section 3 itself is given. 30 to 35%. Okay, so means 34 to 40 marks paper would be there from chapter 21 to 28. 21 to 28 means non-resident taxation specifically is very, very important for you, very, very important for you. And presumptive provisions is non-resident taxation. If you take, then 115A is essential. You cannot, be complete without knowing 115A and the rates given there. Rates are very, very important. And what are the restrictions when you are paying tax under section 115A is very important for you. Then non-residents के लिए, apart from the transfer pricing, one or the other question from transfer pricing every time, it may be on ALP. आप देखोगे ALP का question इस बार भी आया था based on computing your arm length price, and which is based on a study material. ठीक है? अब what happens now? Cleverly, every adjustment being done reversed. Whatever the transactions are given, every adjustment is being reversed. So the आपको जो ऐड करना था वहां पे आपको लेस करना था, और जो आपके स्टडी में दिया था उसका रिवर्स किया. अब बच्चों को लगा कि ये तो फैमिलियर क्वेश्चन है, अब उन्होंने तो वैसे ही सॉल्व कर दिया विदाउट नोइंग कि दे हैव टिंकर्ड द ट्रांजैक्शंस, टिंकर्ड विद द फैक्ट्स. सो उस केस में आपको बहुत ध्यान से फैक्ट्स को पढ़ना है, इवन दो यू नो द क्वेश्चन. बहुत ध्यान से पेपर को पढ़ना है, जल्दी नहीं करनी है. ऐसा नहीं है एग्जाम पेपर सेटर आर नॉट विल टेक इट सो इजी कि आपको एज इट इज उठा के दे देगा और कुछ भी चेंज नहीं करेगा. देयर इज अ पॉसिबिलिटी दे विल चेंज इट. A minor modification may involve a huge differences. So better to go through it. ठीक है? ट्रांसफर प्राइसिंग आता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है. इसमें आपको देखोगे आपको पता होना चाहिए दैट व्हेन इट बिकम योर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, जो भी लिमिट्स हैं, डेफिनेशंस हैं, आपको रिमेंबर ही करनी पड़ेगी. वॉट एवर बी द लिमिट्स आर गिवन कि कब ई बनती है, ठीक है, लोन के केस में, गारंटीज के केस में, है ना, और योर हैविंग अ कंट्रोल ऑन वोटिंग राइट्स के बेसिस पे,
है ना, having taking the whole of the things, 90% of the consumables are purchased from one party or the another party. Then your deemed international transaction is again very very important. Then your if you see 94B every time, अभी नहीं आया, दो 2 attempts से नहीं आया 94B, but most of the time 94B आता है, and it's very very important. Secondary adjustment 92CE, APA का एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट्स आर वेरी एसेंशियल. सेफ हार्बर रूल आपने देखा होगा, सेफ हार्बर रूल्स का आपका एक वी हैव गिवन अ क्वेश्चन ऑन सेफ हार्बर रूल इन द आरटीपी एंड इट हैज नॉट अंडरगोन चेंज. So please go through that, और वो that question we try to cover in a mock test paper also. अभी series आप देखोगे mock test paper की, we try to cover in the mock test paper those questions which are affected by the amendments. Actually we try to cover those questions in the mock test paper. You must be saying कि we have done it, but the amendments are there. That's why we covered the same questions in your mock test paper series. And safe harbor rules बहुत बड़ा है, याद करना थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा आपको, बट इट इज पॉसिबल. वन क्वेश्चन में बी आस्क्ड, बिकॉज आरटीपी में हमने पूछा था लास्ट अटेम्प्ट्स में, तो सेफ हार्बर रूल्स पे समथिंग कैन बी आस्क्ड. ओके, एंड देन योर एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट्स में भी जनरली आप देखोगे, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट्स में रिटर्न फाइलिंग डेट्स पे आता है. समटाइम्स दे आस्क यू ऑन रिटर्न फाइलिंग डेट्स. बहुत डीप में नहीं जाते बिकॉज this is 30% only. International taxation is very very vast, and transfer pricing in itself is a area of practice for many chartered accountants, and it has a huge scope for doing this transfer pricing. So इसमें आपको as a student, if I say the definitions of associated enterprise is very very important. Deemed international transaction, please go through it properly. And then your अभी भी आपको रिवाइज करना है, वो लिमिट्स ध्यान से करके जाना है. Then your if you say 92CE secondary adjustments करना है. Then your 94B very important, ठीक है, in the transfer pricing. Non-resident taxation में of course they may test you on it's not कि 112A, certain provisions which are same for residents and non-residents. So please do those, you have to make a draw कि these are the special provisions which are there only for the non-residents, and there are certain provisions which are applicable for both residents as well as for non-residents. दोनों के लिए ही अप्लाई करने होते हैं. डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन कि नॉन रेजिडेंट कैन नॉट अवेल फॉर डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम, नहीं है कोई रेस्ट्रिक्शन, बट रिबेट नहीं मिलती. रिबेट ओनली रेजिडेंट्स को मिलती है. सो ये वाले माइनर पॉइंट्स हैं, बट दे आर कैन बी टेस्टेड. सो नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन हो गया, देन एडवांस रूलिंग, वन और द अदर क्वेश्चन. छोटा सा टॉपिक है, स्मॉल है, इजी टू अंडरस्टैंड है, जस्ट पॉसिबल है क्वेश्चन को ट्रिकी बनाने के लिए. दे मे टेस्ट यू समथिंग न्यू. If you know the provisions, you can straightforward get the marks. आपको presentation पे ध्यान रखना है. You have to just keep on looking at your presentation. थोड़ा सा mind your presentations properly in the answer sheets. And of course, advanced DTA. DTA is very 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 famous for every time one or the other question is there on the DTA. इस पर थोड़ा आपने देखा होगा MTP mock test paper series 2 में you will find कि आपका DTA का क्वेश्चन है, तो DTA का क्वेश्चन था बट on different ways था. तो वो क्वेश्चन को कैसे ट्रिकी बना सकते हैं वो भी पॉसिबल है. इसमें आपको पता होना चाहिए, if DTA is there, then FTC rules are there, foreign tax credit rules are there. वहां पे you know how to convert the things, at what rate the thing incomes are need to be converted. So please go through those 128 का sections that can be tested. Okay, and, that is very important. In DTA it can be tested. Okay, and rebate, of course, rebate in section 91 तो ऑलवेज आता ही है. और रिबेट को भी ट्रिकी बनाने के लिए दे मे आस्क यू टू कंप्यूट द एवरेज रेट ऑफ टैक्स इन दैट कंट्री इटसेल्फ. इट्स नॉट नेसेसरी कि दे विल गिव यू द रेट स्ट्रेट फॉरवर्ड, और दे मे गिव यू द रेट्स फॉर डिफरेंट इनकम्स, एंड यू हैव टू कंप्यूट द एवरेज रेट देन. एंड किस तरीके से करना है, उसके सिमिलर क्वेश्चंस यू विल फाइंड इट इन योर आरटीपी ऑल्सो, इन योर एमटीपी ऑल्सो, देयर यू विल गेट. सो ये एरिया हो गया आपका 4 चैप्टर्स हैं, एंड द लास्ट 4 चैप्टर्स आर थ्योरेटिकल. ओके, एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आता है, इसके लिए ऑफ कोर्स आपको यू हैव टू स्टडी अ लॉट, बट इट्स ओनली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. तो आपके कुछ टाइम में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको तो आप देख ही लो प्रॉपर्ली अच्छे से. एंड ऑफ कोर्स इट्स वेरी इंटरेस्टिंग आल्सो. मॉडल टैक्स कन्वेंशंस का ओवरव्यू इज गिवन, एंड मॉडल टैक्स कन्वेंशंस आर सच
important aspects of direct this double taxation avoidance relief, which are the basis for drafting this double taxation avoidance relief, and it give you a touch of the these how to small tax conventions पे कौन से वही articles हैं, उसी basis पे countries adopt these small tax conventions while entering into the double taxation avoidance relief. ठीक है, latest developments में they may ask you something, so go through the let us recapitulate also been given at the end of this chapter, and these are being given in your saransh also, so that will help you to revise these chapter from chapter 25, 26, 27, 28. These 4 chapters knowledge based questions is asked. So 30-35% you have to score full. आपने यहाँ पे 32-40 कर लिया स्कोर, उसके बाद तक बहुत ही लिमिटेड है कि आप देखोगे उसके बाद I will move forward to subsection 2. I will go to subsection 2 then of what? Section 1. If you see there, it's for 20-22%, okay, and carrying huge weightage. Now equalization levy has gone. Equalization levy है ही नहीं अब आपका, okay, that is also gone from this taxation of digital transactions, है ना? This 2% पे गया, it's gone, withdrawn, abolished, and this 6% also abolished. So what is left then? VDA transactions, limited portion, one section, no deductions, simple calculations, specific rate, है ना? It's available. But वहां पे आप देखोगे शायद हमारे क्वेश्चन में we have given in study material, but we skip to give you the your rebate. We also skip while doing it. We just skip because 12 lakh की limit हो गई थी वहां पे other incomes के लिए, you will get the rebate, but we skipped, so we have modified it, updated in our web hosted copy of the chapter. We have updated it, and a corrigendum also we have issued for that sum. So please go through. If you're having the hard copies, then please refer that on the website. And then assessment of charitable trust, REITs is very favorite topic. Every time REIT पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता ही है, some or the other questions must be there in the REIT. बहुत small topic है, easy to understand है, easy to revise है, easy to catch the marks, ठीक है? But there is a linking बहुत है, there is a huge linking कि आपको 115 UA के साथ में TDS के provisions भी साथ में रख के पढ़ने हैं. You have to read all the TDS provisions also. Investment funds की pass through status किस income के respect में, किस income is taxable in the hands of the investment fund, which income is taxable in the hands of unit holders. So all these thing is there. REIT is very important. ट्रस्ट में इफ यू सी इस बार फुल फ्लैश क्वेश्चन पूछा था, accredited income is not tested for a long time, so it's possible they may test you on accredited income, but if you see there are amendments also in the trust chapter, so go through those amendments, ठीक है? Your specified person की meaning has been changed, and to cover that amendment we have given a descriptive question in the RTP, so go through that question. और फर्दर अमेंडमेंट्स के प्लीज गो थ्रू दी बोल्ड एंड इटैलिक पोर्शन. आप जिसके पास ओल्ड बुक्स हैं वो आप एटलीस्ट वेब होस्टेड कॉपी पे जाए, वहां से यू जस्ट मैच योर पब्लिकेशन, यू विल इजीली कम टू नो कि पहले तो आपको ओवरव्यू इज गिवन इनिशियल पेजेस में, वहां से आपको पता चल जाए कि दीज आर द अमेंडमेंट्स इन दैट चैप्टर. उसके बाद टू अंडरस्टैंड दोज अमेंडमेंट्स प्लीज सी दी वेब होस्टेड कॉपीज, ओके? वेबसाइट पे जाके आप मैच कर लो. ट्रस्ट के केस सिनेरियोज specifically being asked ki registration as validity being tested, or corpus donations many times being tested, or your this applications out of loan which is not allowable as application, expenditure out of loan is not allowable as application. So these things, and sometimes they have tested, of course, specified persons is a new thing they have tested, and what are the conditions to be eligible. 11.5 mode mein you have to invest the things corpus fund ka, and if you are giving the corpus fund to the another entities out of the current year's income, then 85% is only allowable as application, and of course is allowable as expenditure. And if you are given corpus donation out of accumulated income, then no, you will not be eligible for any applications. So एक बार आप देखोगे, अपने नोट्स भी बना लो, साथ साथ में एक माइंड मैप बना के रखो जहां पे आप स्मॉल चीजें कर लो, फिर से रिवाइज कर लो, फिर से बनाओ, उससे आपको होल्ड आ जाएगा इस पे. यू विल हैव अ गुड होल्ड ओवर दिस कंसेप्ट, ठीक है? इसके बाद आपने जब आपने ये दोनों चीजें कर ली, मैंने आपकी सेक्शन 3 यू हैव डन, and subsection 2 of section 1 you have done, then you have remained with
first section, subsection, which is also 24 to 26 marks, और it's not कि ये सिर्फ limited to this section है, ये आपका extend करता है आपके interest and taxation पे भी. This provisions of this these chapters are extended to your chapters of non-resident, DTA में भी these are being tested, and these are the foundation. आपने देखोगे inter से you are studying those chapters and they are still relevant. Of course, the extended versions are relevant for you. So full-fledged questions are there from this subsection only, the computation of total income tax liability, and majority of the things, concession tax regimes, most of the time concession tax regimes are tested. So concession tax regimes में if you go through, there are certain deductions which are not available. ठीक है, अब क्या available है क्या नहीं है उसको remain करने के लिए जो छोटी list है, that you catch on. For example, deductions are not available. Okay, so no deductions from gross total income are available apart from 80 JJAA or 80M. Inter-corporate dividends. These two are available only, or no others are. Easy to remember. Then आपका PGBP में if you go, so there is a list. Addition depreciation many times being tested. Addition depreciation नहीं मिलता under the concession tax regimes. Apart from that, scientific research. Okay, so contributions basically to another entities are not available. 35, 1, 2, 2A are not available, and contribution to biotechnology, this in-house scientific research नहीं मिलता in case of biotechnology production companies. So क्या नहीं मिलता? Then other tea development का है is there. Then agriculture notified institute, notified skill development program is there. So आप एक बार रिमेम्बर करने के लिए कैसे रिमेम्बर करना है उनको, एक बार टिप्स पे रखो क्या चीज मिलती है क्या चीज नहीं मिलती है, जो छोटी लिस्ट है उसको याद रखो. It will help you to do this concession tax regime. Then concession tax regime में what is important? Surcharge is very important. जहाँ पे हम मिस कर देते हैं वो भी जब computational की प्रॉब्लम होगी तो फिर भी याद रहेगा, you will remember it. But जहाँ पे when it is tested in the form of some MCQ, there is a possibility कि आपकी total income is not exceeding your 1 crore and you have not applied the surcharge. There you have to be very careful कि वहाँ पे surcharge you have to apply. And the apart from the 22% in case of 115 BAA, the specific rates are also relevant for you. It's not that every income is taxable at the 22%. You have to apply 12.5% also, or 20% in case of short-term capital gains. Two rates. Capital gains is now become so easy. Period of holding 24 months की रह गई है only. 24 months से ज्यादा है, 24 months से कम है. Then your what we say 24 months and 12 months. Okay, these two periods of holding, except in case of slum sale. Slum sale में still they have not changed. Slum sale में still 36 months की period is there. Okay, so that is one critical point in capital gains. Then of course, one thing which is given as a grandfathering to the individual residents and HUF, they have given कि you have the option to take the benefit of indexations, but while doing your tax liability, not while doing your computations. वो कह रहे हैं कि हम आपको total income के time पे you will not be able to do it. You know, at the time of computing your tax liability, the excess portion, whatever be the excess portion, which you are have to pay due to the inclusion of the capital gains without indexation, that amount will be ignored. That amount will be ignored while doing your tax liability. सिर्फ tax liability के time उन्होंने किया है. So it has an impact. While doing your surcharge calculations, you are including the capital gains as per the without applying the indexation benefit. But while doing your tax liability, you have to make a comparison. What is the excess amount which you have to ignore? So that would be your tax liability. It has an impact. So it's not key. Whatever the provisions, they do it. You know, every year they change them. There is a basis and there is a proper rationale. कि ये करेंगे तो उनका कितना impact होगा tax पे. So all this, they do the calculations before doing any kind of amendments. So it's not straightforward. They have not given you this benefit only to the individual residents and HUF. Companies के केस में अगर this question is covered, straightforward. You have to do the sales consideration minus this cost of acquisition without any indexation, and it's directly 12.5% is applicable. So 12.5% का rate है, and then 20% का rate है. These two rates are there for the LTCG, except in case of individual resident and HUF. So ये बहुत important है यहाँ पे. Additional depreciation बहुत important. Additional depreciation many times हर question में you will find that additional depreciation is there, and उसको जब concession tax regime होता है तो specifically they test you. Concession tax regime का question if is there, then they test you the deductions under section 80 JJA and 80M that can be tested.
Other deductions are not allowable, but these are allowable. So इस पे some MCQ can also be framed. So ये जो section है, it's a huge one, but ऐसा नहीं it's very difficult. आप देखोगे अगर आपने इन chapters को you have studied these chapters by making a mind map of these chapters, then definitely you will able to solve the questions easily. You will able to solve. If first question में you are feeling कि some of the adjustments are very new and you don't know the answer, so don't worry about it that you are not aware of that particular adjustment. You just solve it. Whatever is coming in your mind, do apply your mind. Okay, do try to understand कि ये allow होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. These are the two things. Something which is debited to your P&L account, but it is not allowable as deduction. So what you have to do, you have to add it back. Something which is debited but allowed to you as a deduction, so you don't have to make any treatment for it. So these are the two things. उसके बाद something is not debited to your P&L account, but it is allowed. So वो आपको ये एनालिसिस करके यू हैव टू मेक इन वो वाली एडजस्टमेंट्स आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन में होंगी, विच इज नॉट डेबिटेड टू योर P&L अकाउंट बट आर अलाउड एज डिडक्शन. ठीक है. सो कुछ एडजस्टमेंट्स नहीं समझ में आ रही हैं, आप थोड़ा सा अपने प्रोविजन व्हाट यू हैव स्टडीड उसके बेसिस पे यू सॉल्व इट. हो सकता है इट इज डिपेंडेंट ऑन केस लॉ आल्सो. केस लॉज आर आल्सो नॉट डिसाइडेड एब्रप्टली. They apply the provisions, they go through your provisions, they do analysis, then they decide the case law based on some rationale. So वो जरूरी नहीं है, हो सकता है आपका जो rationale है, what you have think of, same thing is being applied by the courts also. So अगर वो आपका same आ गया तो you will get a good marks, full marks मिल जाए. नहीं अगर हो तो कोई problem नहीं. Whatever you think ना, you just give a brief, substantiate your things with the reasoning, then you solve it. आंसर करें. स्टेप मार्क्स आर देयर, सो डोंट वरी अबाउट इट. अगर आपको 14 मार्क्स में से अगर आपको 2 एडजस्टमेंट नहीं आती हैं, आपको 4 एडजस्टमेंट्स आती हैं या फिर 8 एडजस्टमेंट्स आती है, तो यू विल गेट द मार्क्स फॉर दिस 8 एडजस्टमेंट्स. वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू सब्सटेंशिएट. अगर आपके कंप्यूटेशंस हैं, फॉर एग्जांपल LTCG की कंप्यूटेशन है, फॉर एग्जांपल टैक्स आल्सो यू हैव टू कंप्यूट, तो राइट द रेट ऑफ LTCG एट द 12.5%. ठीक है. इफ यू आर कंप्यूटिंग द टैक्स at the rate of 30% because of the turnover of the company during that preceding the previous year, that is 23-24 for your thing, is not exceeding 400 lakhs, then what you will do, you have to do at the rate 30%. So you mention please 30%. If it is not exceeding, then you will mention 25%. It's possible your figure will not match, your figure will be different due to some wrong adjustment, due to some wrong calculation. Okay, it's possible, but you will get the marks for that tax liability if you have mentioned the rate. Okay, so mention that rate or highlight it also. Okay, if surcharge is applicable, then mention surcharge at the rate 10%, surcharge at the rate 12%, okay, surcharge at the rate 7%. Whatever be the applicable rate, that you please mention. Okay, for that you will fetch the marks. Okay, then 80JJ की computations are there, so please don't just you write deduction under section 80JJA. Then you please mention that 30% of additional employee cost. Okay, and you have to compute the additional employee cost. If it's a full-fledged computation, many employees are given and huge data is given for different dates they have joined, of course you have to do a full-fledged computation that you can show as a working note. While doing your total income computation, you can show it there, then and there. Okay, there you will reduce and show the this deduction under section 80JJ. Right? So I'm saying don't worry. In case if you feel some adjustment you are not knowing, do it, solve it. You will get the marks based on your steps. जो भी steps आपके ठीक होंगे, if you have substantiated your things with proper reasoning, so you will fetch the marks for it. So subsection 1 can be tested in descriptive portion. Basically इसकी testing descriptive में ही होती है, but ये basis है आपके other provisions के लिए भी, other chapters के लिए भी. So you cannot skip it. Remember, capital gains, first chapter की rates, go through the default tax regime rates, go through the surcharge rates, go through the marginal relief, and PGBP, of course. PGBP में very important presumptive taxation provisions, tax audit. Tax audit is not only tested in PGBP. Tax audit का एक separate section chapter है, वहां पे भी वो test किया जाता है. That is also tested there. तो आपको 2 places that PGBP is being tested. ठीक है. PGBP में presumptive हुआ आपका, then tax audit हुआ, additional depreciation हुआ, scientific research की calculations हुई. These are frequently being asked. Then non-deductions.
on basis of actual payments hai, and then non-deduction on the basis of non-deduction of TDS and all. So these are the things basically in PGBP. Then capital gains may it's now becoming easy, and two just period of holdings, then rates, long term, short term. Of course, exemptions, you should know about the exemptions, but full-fledged sometimes actually individually testing itni hoti nahi hai in the final label. They can be tested only in the case of non-residents or the DTA provisions basically. आएगा तो इसकी टेस्टिंग हो सकती है in the form of your case scenario और MCQ segment में. इस बार भी क्वेश्चन if you have gone through the January 26 examination, you should go through. It's not कि आपका amended नहीं है तो आपको नहीं जाना है. Please go through those suggested answers. Try to understand how the questions are being framed, what they require from the students, that you will understand by just going through the past papers. Okay, so they have tested the very interesting, very nice question is being framed, and they are asking you to that transfer of some capital asset to the subsidiary company from the holding company, or the holding company to subsidiary company, and then that transaction is being tested. And subsequently, whoever, I'm not remembering subsidiary and transfer ke holding and transfer ke subsidiary ko, but whoever be the transferee, us case mein that converted it into stock in trade. It's very interesting question, very nicely framed question, and you please go through that question. उस तरीके का आपको पता होना चाहिए. Then what happens subsequently, it also converted into stock in trade. It cannot transfer the things na, so again it will be taxable in the hands. So once it is exempted, again it become taxable. So these are being tested. Then ये आपका next question is not that difficult. उसी का same part, second part में भी something very easy being tested, I think. So वो अच्छे questions are also framed. तो आपको analyze करना है कि ये थोड़ा it seems very important for us and it can be tested. उन provisions को आप highlight कर लो, है ना. जैसे कि मैंने कहा mind map के through you can just make a call कि what all you have to refer before the day of your examination. और मैं कहूँगी अभी आप MTPs अगर आपने attempt नहीं करी हैं branches में, so what you do, आप पूरा revision strategy जैसे आपके करने वाले एग्जाम अपीयर करने से पहले you do make those revision strategy. Accordingly, you after that you take up your mock test paper. ठीक है, आपने बहुत अच्छे से सेक्शन 3 समझा, सेक्शन 1 समझा, सेक्शन 2 आप देखोगे ना, सेक्शन 2 इज वेरी ह्यूज. प्रोसीजरल लॉ है, बहुत बड़ा है, काफी ह्यूज है. ऐसा नहीं डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं है, बट आपको रिमेंबर बहुत करना है. यू हैव टू रिमेंबर द लिमिट्स, यू हैव टू रिमेंबर द थ्रेशोल्ड्स, यू हैव टू रिमेंबर मेनी थिंग्स. इट्स वेरी ह्यूज. बट आप ट्रेंड देखोगे, टीडीएस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, one of the very very important chapter. One or the other question is being asked from TDS provisions. Not only in this it's applicable, it may be tested in a way, case scenario based may be testing hoti hai iski. So TDS is very important. TCS mein now there are certain amendments are there in the TDS provisions. ठीक है, rates are being reduced, thresholds are being increased. So go through those rates and thresholds, very important for you. Okay, TCS on overseas tour packages, the limit has been increased, from the TCS on that overseas tour package, or the remittances under LRS are being increased. So those rates. Then apart from this TDS, tax audit is very important. Every time एक नया क्वेश्चन टैक्स ऑडिट से आता है. ठीक है, उसके बाद बचे हुए आपके सेक्शंस हैं इनकम टैक्स अथॉरिटीज, असेसमेंट प्रोसीजर, DRC बहुत छोटा है, बहुत easily you can do. Miscellaneous provisions. Miscellaneous provisions may if you go through 269 SS, 269T, 269 SU, these are frequently tested, very important. Penalties is huge and of course you have to remember a lot, but आपने पढ़ाई की होगी तो आपको याद आ जाएगा. आप एटलीस्ट पेनल्टी की रेट्स और जो टेबल इज गिवन इन स्टडी मटेरियल दैट यू रिवाइज इट. Okay, assessment procedure may if you see updated return में there is an amendment, so it's very important for you. Updated return, go through the updated return. ऐसा नहीं है whatever I am saying, I am just telling you कि इस पे थोड़ा emphasis ज्यादा रखना, so that there is a possibility कि आपको confidence रहे when you are going to appear for the examination. It's not कि आपने skip करके चले गए, आप कुछ पढ़ के नहीं गए. Please don't take my suggestions or my guidance in that way. It's assumed कि you have go through this, but specific emphasis you can place on these provisions. Assessment procedure में block assessment is very essential. Income escaping assessment is very essential. Updated return हो गया. Due date of return filing is very 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 easy and इतना difficult नहीं है. Easily you can have a good understanding of those provisions. Of course block assessment you just go through block assessment में बहुत difficult नहीं है.
block period is 6 years ka, that may be asked. Then block assessments, whatever be the assessments happen during that year which are pending, they will all await. And on that basis, one of the question is there in the RTP. I will try to take some of the provisions and will brush up those things, and let's revise through the RTP. I will take that. Just I'm explaining how you can make a strategy. So आपका assessment procedure हुआ search and seizure में, if you see basically collection of information और search and seizure generally a question being asked, मतलब इसी इन्हीं में से क्वेश्चंस आते हैं. आपको ये नहीं पूछते ना कि who is the income tax authorities and all, who can be an assessing officer, what is the jurisdiction of the assessing officer, just knowledge, because it's not a paper of knowledge based questions. So आप देखोगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कहाँ पे टच होने. केस लॉज आप इसमें प्लीज ढंग से करके जाना. whatever be the case laws given in this portion ना, generally case law based questions are asked from this section. So section 2, case laws based, TDS provisions, assessment procedure is very important, miscellaneous provision, tax audit. आपका if you are aware of 100% में से आपको ऐसा जरूरी नहीं है 10% पेपर और 20% पेपर ही डिफिकल्ट होता है. मतलब ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत ही डिफिकल्ट आ गया. वो भी आप कर लोगे अगर आपने प्रोविजंस पढ़े हैं. तो उसको देख के डोंट बी स्कैर्ड, डोंट थिंक कि व्हाट इज दिस पेपर आई एम नॉट अवेयर ऑफ. जो आपकी पब्लिकेशंस हैं उनको ठीक से गो थ्रू करके जाना. ठीक है. प्रोविजंस के माइंड मैप, अपने चैप्टर्स के माइंड मैप अभी नहीं बनाए हैं तो अपने खुद से बना लेना, जिससे आपको एक पूरा कॉन्फिडेंस रहता है कि इस चैप्टर में ये है. आप एक बार जब रिवाइज कर लो, एक दिन रखो, allocate 1 day for doing your mock test papers. It will help you. Even those who have done your RTPs एक बार कर चुके हो, फिर से करना. और today also again I will try to take you through the RTP. ठीक है. उसके अलावा आप अपने आप से सॉल्व करना. मेन प्रॉब्लम विद द स्टूडेंट्स, दे डू नॉट सॉल्व दे एक्चुअली व्हाट हैपेंस ना, थोड़ा तो लेजीनेस है. अब AI आ गया तो ऐसा नहीं है कि आपको सॉल्व नहीं करना, आपको यू हैव टू अटेंड द पेपर. और पेपर के टाइम पर भी आपका इट्स नॉट कंप्यूटर बेस्ड, जहां पे आपको AI के बेसिस पे यू कैन कैलकुलेट द थिंग्स. यू हैव टू सॉल्व इट ऑन योर ओन. और यही स्ट्रेटेजी वहां पे जाके आपको खुद सॉल्व करना है, तो आपको पहले से उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. यू हैव टू प्रैक्टिस. तो जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो बिना देखे, रिवीजन कर रहे हो. अभी मैंने सेक्शन 3 उठाया, अभी मेरे नॉन रेजिडेंट के जितने इलस्ट्रेशंस हैं, जितने मेरे टेस्ट और नॉलेज क्वेश्चंस हैं, बिना देखे सॉल्व करो ना उसको. टाइम लिखो कि मेरे को आज ये वाला चैप्टर करना है, आई हैव टू फिनिश दिस चैप्टर. ऐसा नहीं है, आई नो आई कैन अंडरस्टैंड यू हैव अदर पेपर्स आल्सो, बट यू हैव टू मेक अ स्टडी प्लान. यू हैव टू गिव अ टाइम. आपको पता है कि मेरा ये सब्जेक्ट में आई नीड मोर फोकस. मेरा डीटी अगर आपका अच्छे से हो गया तो प्लीज अलोकेट योर टाइम टू द अदर सब्जेक्ट. इट्स नॉट कि आपको डीटी में ही फोकस रखना है. इफ यू हैव डन योर डीटी वेल, आपने रिवीजन भी कर लिया, यू हैव गोन थ्रू योर you have practiced everything and you know the things very well, you are able to approach your RTP, you are able to approach your MTPs, you are able to approach the past year papers also. That's well and good. एक बार लेकिन revision is very necessary because it's not open book exam basically. The problem here is what happens ना, you have to memorize also certain things. वो memory based जो चीजें हैं ना, वो miss ना हो, उसके लिए उन चीजों को at least you should revise. ठीक है. Those who have done it very well, वो चीजों के लिए you revise those things. Those अभी लग रहा है कि नहीं, some more practice is needed. Please do solve the question. Take your pen and paper. Okay, take your pen and paper, solve it, and then make a comparison. कब करोगे? Solutions are given to you. It's not necessary कि आपको बहुत डिटेल्ड होगा. वो आपके बुक्स में ज्यादा दिया है, इसलिए दिया है to make you understand certain things. ठीक है. The reason है उसका, reason is कि अगर हम आपको to the point देंगे तो आप वो to the point भी रिमेंबर नहीं करोगे. उसको समझाने के लिए वी हैव टू गिव समथिंग इन डिटेल. सो व्हाट यू डू, आप सॉल्व करो, सॉल्व द थिंग्स, देन मेक अ कंपैरिजन. जहां पे गलती हो रही है उसको मार्क कर लो, या उसके लिए अलग से नोटबुक बना लो कि इस चैप्टर में मुझे इस एरियाज पे और फोकस करना है. एट द बिफोर डे ऑफ इट एग्जाम, टेक द हेल्प ऑफ दोस एरियाज. ठीक है. गो थ्रू इट अगेन, फिर से कर लो रिवाइज. ओके. सो दिस इज द वे यू कैन रिवाइज योर थिंग्स. What next? I think this is the all things. Actually, इसमें मैंने just question papers मांगे थे. रोशनी has raised her hand for a long time. रोशनी, you can Yes, ask ma'am. your query if you want. Yeah. Yes, ma'am. In 14 marks question, ma'am, for each adjustment, the explanation has to be given. Yes, yes. You have to give the Over the explanations. adjustment, or we can write a separate note, which is the better way of presentation, ma'am.
Actually, Ma'am, which is the better way of presentation, whether to give the explanation? see, I personally feel Yes, ma'am. it's you can do it कि आप actually basically आप देखोगे first question is pure मतलब mainly based on PGBP problem. ठीक है, उसके बाद में it may test your house property, it may test your other sources also, capital gains also. It's possible. If see, you need not to write a very big and huge things. What happens now if you do it separately? Linking Yes, it with ma'am. a different note number is somehow is difficult for you. And even for the examiner Yes, ma'am. also it will be difficult कि आपकी ये adjustment यहाँ से पड़ेगा, उसका note वो नीचे जाके पड़ेगा. तो better to Yes, ma'am. write it then and there. Better to write it then and there. अगर suppose कुछ calculations are involved, है ना, huge big amount की calculation, for example मैं कहूँ कि depreciation की involvement है, depreciation compute करना है, मेरे पास WDV दी हुई है और बहुत तरह की plant and machinery is given in the question. अब उसको लग रहा है कि Yes, आपके ma'am. इतनी बड़ी कैलकुलेशंस मेरे लिए बहुत कम स्पेस है बिकॉज आपको 2 कॉलम्स तो एक इंटरनल एडजस्टमेंट्स के लिए चाहिए एंड आउटर कॉलम एक बाहर के एडजस्टमेंट्स के लिए चाहिए, टोटल करने के लिए चाहिए. तो आपके पास स्पेसिंग कम हो रही है वहां पे, तो आप उसके लिए देयर यू कैन जस्ट राइट कि रेफर वर्किंग नोट बिलो एट द एंड ऑफ क्वेश्चन, है ना, रेफर वर्किंग नोट. अगर इज ए ह्यूज कंप्यूटेशंस, अगर आपके स्मॉल कंप्यूटेशन से बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं है, सिर्फ 2 प्लांट एंड मशीनरी दी है, डिफरेंट रेट्स आर गिवन, तो आप वहीं पे करो. वो आपके लिए भी इजी होगा, एक्चुअली वो आपके लिए भी इजी होगा और एग्जामिनर के लिए भी इजी होगा आपको मार्क्स एलोकेट करना. क्योंकि आपका मार्क्स बेसिकली आपकी अमाउंट से ज्यादा आपकी सब्सटेंशिएट आपने किस बेसिस पे किया उस पर डिपेंड करता है. अमाउंट डेफिनेटली ma'am. मैटर करता है बिकॉज उसमें बहुत कैलकुलेशंस तो है नहीं. अगर आपने सब्सटेंशिएट किया, आपको रिक्वायर रीजनिंग पता है, तो आप उसी के बेसिस पे अमाउंट लिखोगे, फिगर लिखोगे, बट वो लिखना बहुत जरूरी है. ठीक Yes, है, ma'am. सो आप उसके बाद ही करो. आई प्रेफर कि आप उसके बाद ही करो. Okay, ठीक है, ma'am. जैसे हमने फॉलो कर रखा है सजेस्टेड आंसर्स में, ट्राई टू डू इन दैट मैनर. ओके. Okay, ma'am. या Yes, ma'am. एनी One अदर more थिंग? question was there, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, for या grossing of provision, whether we have to do it for NR taxation or we have to consider it for individual resident calculations also, ma'am. which one can you just again tell me? Grossing a provision, ma'am, like for interest हाँ, dividend, for that we have to look into for NR taxation, or if there is a question नहीं, with respect to it's actually individual what is happening calculation, ना, we some have to. I got your point. Actually, now the thing is there is some confusion in the minds of students also. We always try to give instructions कि बच्चों को information clearly दी जाए, receipt basis पे ना हो कि receipt basis पे आपको grossing up करनी पड़ रही है. आपको net of TDS रखा है तो definitely you have to do the grossing up. चाहे वो resident हो चाहे वो non-resident हो. Difference resident और non-resident Yes, पे ma'am. is that कि in case of resident, health and education cess is not applicable while doing your TDS, while deducting your Yes, TDS. ma'am. Whereas in case of non-resident, you have to keep in mind HEC is also attracted. So जो आप grossing Yes, up ma'am. की amount निकालोगे, that 100% minus that tax rate plus the HEC करके करोगे. In case of resident, you will do only with the rate of tax. That's a different. It Yes, is ma'am. applicable for both. So receipt basis पे लिखा हुआ है, you just write a note कि it's assuming कि it's on gross basis, it's been received, so you need not to do. If you're writing it's net or TDS, then you do it. ठीक है, there is a Okay. बहुत receipt basis पे होता है, but in case of dividends की बात करो, if dividend is written, dividend is received from that particular company, we always try to take it as a net basis पे because received word is written, and when you receive the things, then definitely TDS must have been deducted, so you do it. But when it is written, Okay. it's received from Indian companies, बहुत सारी कंपनी से मिला हुआ है. अब in Yes, case of individual, basically it is possible कि 5,000 की limit is there, 10,000 now it's is there. yes. So वो उसके बेसिस पे इट्स मे बी पॉसिबल कुछ कंपनी ने TDS डिडक्ट ही ना किया हो, वहां पे हमने ग्रॉसिंग अप नहीं किया, वी हैव नॉट डन द ग्रॉसिंग अप the way we do. Okay. But frankly speaking, you can just write on the basis of some assumption that it is assumed if this amount is net of TDS or gross of TDS, accordingly you can proceed and do the answer. If received word is there, if question clearly is writing it's net of TDS, then definitely you have to do the grossing up. ठीक है? Okay, ma'am. Okay. Thank you Yeah. so much, ma'am. Yeah. Sai Sandeep is asking if we are running short of time, can we solve the total income question without following regular format of adding and deducting items?
एक्चुअली शॉर्ट ऑफ टाइम में आप, अगर आपको लग रहा है कि फिर देखो, जब आपके पास टाइम नहीं बचा, इफ यू डोंट हैव द टाइम, तो आपको जो भी लग रहा है, जैसे भी लग रहा है, उसको सॉल्व करके आओ। जितने भी शॉर्ट टाइम में आप जितने बेस्ट वे में कर सकते हो उस वे में करो आप क्वेश्चन को, ठीक है। आप, आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी तो है नहीं, ऑप्शन ही नहीं है, बिकॉज आपके पास टाइम ही नहीं बचा, आपने इतना टाइम अदर्स में यूज कर लिया। तो जिस भी बेस्ट वे में यू कैन प्रेजेंट योर आंसर, इन दैट वे यू प्रेजेंट योर आंसर। बट अगर मेरे से बोलोगे मेरे पास टाइम है, आप प्लीज अपना टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से रखो, उसके लिए आप टाइम एलोकेट करो। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला था आपको ईच क्वेश्चन आपको 14 मार्क्स का है, ठीक है। ईच क्वेश्चन का आपका अराउंड 27 मिनट्स मिलेंगे, 25 टू 27 मिनट्स, ठीक है। सब क्वेश्चन को मिलेंगे इतने इतने। 54 मार्क्स आपके मार्क्स के बेसिस पे, 54 मिनट्स आपके मार्क्स के बेसिस पे एमसीक्यू सेगमेंट के होंगे। If you spend in MCQs 54 minutes, it will be difficult for you to complete your descriptive portion in that time. So try to do it in 40 to 45 minutes. ठीक है, उससे ज्यादा बियॉन्ड नहीं जाना। वैसे 30 मिनट्स में हो जाता है अगर आपको पता है कि फैमिलियर भी चीजें हैं, और तो आपको 45 मिनट्स मैक्सिमम 45 मिनट्स में खत्म कर देना है। फिर इसके बाद ये कहो कि आप डिस्क्रिप्टिव के बाद फिर से दोबारा से एमसीक्यू पे आना चाहोगे, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। अगर आप 40 मिनट्स में करते हो तो फिर भी पॉसिबल है कि आप फिर से रिविजिट कर सकते हो एमसीक्यू सेगमेंट्स को। सो आप अगर लग रहा है कि आप फुल फ्लेश क्वेश्चंस, इफ यू आर नॉट एबल टू प्रोसीड विद, आप सारे क्वेश्चंस कर लिए से फुल फ्लेश रह गया है, तो आप अलोकेशन अगर आपको 25 मिनट्स का क्वेश्चन को मिला तो डेफिनेटली आपके पास टाइम बचेगा। अगर आपने एक क्वेश्चन पे आपको पता है कि 14 मार्क्स का क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे से आता है, टीडीएस का क्वेश्चन, तो ऐसा नहीं है कि यू कीप ऑन सॉल्विंग द टीडीएस प्रॉब्लम। आपको मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 14, इट कैन नॉट गिव यू मोर देन 14 मार्क्स। ये मेक श्योर इट कैन नॉट गिव यू मोर देन 14 मार्क्स। इट इज पॉसिबल कि आपका कुछ क्वेश्चंस इज पॉसिबल, इट्स नॉट कि सारे क्वेश्चंस नॉट कमेंसुरेट विद योर मार्क्स हो, ऐसा नहीं होता। इट इज पॉसिबल सम क्वेश्चंस आर रियली रिक्वायर्ड यू टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एंड कैरिंग ओनली 6 मार्क्स और 8 मार्क्स, इट इज पॉसिबल। वो क्वेश्चंस में समझ सकते हो कि आपको 25 मिनट्स की जगह आपको 30 मिनट्स लग जाए, तो वो आपको एडजस्टमेंट देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं होती, मार्क्स इतने होते हैं, वो क्वेश्चंस फिर आपके कम टाइम लेंगे, तो आपको वो मैनेजमेंट यू हैव टू डू इट, ठीक है। और एंड में तो आपके पास जितना टाइम मिला है, जो भी क्वेश्चंस आप मैक्सिमम सॉल्व कर पा रहे हो, प्लीज डू इट, ठीक है। प्लीज डू इट सो दैट जीरो से अच्छा बेटर कि यू विल गेट सम मार्क्स। आपको आता है, आपको पता है कि यार मैं इतना तो प्रोसीड कर ही सकता हूँ, इतने तो मार्क्स मुझे मिल ही सकते हैं, तो डू इट, है ना। फॉर्मेट तो देखो, फॉर्मेट आप जैसे व्हेन यू स्टार्ट विद कंपटीशन प्रॉब्लम, आपको कहां से स्टार्ट करना होता है। जनरली इफ यू आस्क मी, अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं है, सैलरी तो होगा नहीं, कंपनीज का केस है, जनरली कोऑपरेटिव सोसाइटीज का केस है, तो सैलरी से तो स्टार्ट हो ही नहीं सकता। फर्स्ट क्वेश्चन आया आपका हाउस प्रॉपर्टी पे, माइंड में रखो ना, हाउस प्रॉपर्टी इनकम देखो ना, जस्ट रीड द क्वेश्चन, लुक आउट फॉर द हाउस, नहीं है मूव टू द पीजीबीपी डायरेक्टली। आपके पास टाइम शॉर्ट भी ना, पीजीबीपी से स्टार्ट करो आप। नेट प्रॉफिट एज पर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिया, देन स्टार्ट द एडजस्टमेंट्स। Then you have, this is capital gains. Capital gains based amount is debited. Sales consideration is debited to your P&L account that you have to add back. और उसका ट्रांजेक्शन आप जाके कहाँ पे करोगे? कैपिटल गेन्स में। वहां पे यू आर नॉट गोइंग टू सॉल्व द कैपिटल गेन्स अमाउंट, यू विल गो टू द कैपिटल गेन्स हेड्स ऑफ इनकम, वहां पे करोगे। तो जब आपने पीजीबीपी, आपको पता है कि आपके पास शॉर्ट टाइम है, अगर आपने पीजीबीपी भी कंप्लीट कर लिया, तो आपको पता है कि मेन एडजस्टमेंट पीजीबीपी की थी, कैपिटल गेन्स की सिर्फ मेरे 2-3 मार्क्स थे, तो आपको वो वाले सेगमेंट में मिल गए थे मार्क्स। तो ट्राई टू फॉलो दैट। एक्चुअली मैं तो कहूंगी, ऐसा नहीं है कि आपने जस्ट कुछ तो फॉर्मेट करोगे ना आप जितने भी टाइम में, तो आप पीजीबीपी से स्टार्ट करो। अगर नहीं है हाउस प्रॉपर्टी इनकम, देन यू प्रोसीड विद, जितना टाइम है उतना टाइम यूटिलाइज योर टाइम, राइट इट, देन जितना आप लिख सकते हो उतना कोशिश करके आओ लिखने की। कुछ गलत मत लिख के आओ, गलत लिख के आओगे तो विल नॉट गेट एनी मार्क्स, ठीक है। सेक्शन नंबर्स याद नहीं है, जल्दी जल्दी में नहीं याद आ रहा है यार, इसका क्या सेक्शन नंबर था, 40A1A था, 40A1 था, 80 TTA था, 80 TTB था, नहीं याद आ रहा, यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर इट, डोंट राइट सेक्शन नंबर्स इन दैट शॉर्ट टाइम। इट्स पॉसिबल कि आप थोड़ा सा रिमेंबर नहीं कर पा रहे हो, तो मत लिखो। आपको प्रोविजन याद है, प्रोविजन लिख दो ठीक से, गलत सेक्शन मत कोड करो। गलत सेक्शन कोड कर दोगे ना, एग्जामिनर को एक माइंड में आएगा, यार व्हाट इज दिस, ही इज नॉट नोइंग द प्रोविजन, छोड़ो, मूव अहेड। He has to check a lot of copies, है ना। He does not have that much of time कि he will spend on everything. So better to write to the point. Don't write anything wrong. Citations of case laws are not remembering. Just write down High Court or the Supreme Court, जो भी याद आ रहा है आपको, ठीक है, वो उसके हिसाब से स्टार्ट कर दो, और जस्ट आप प्रोविजन से स्टार्ट कर दो। In that way you answer. Yes, Naveen is asking, are the questions are based on AI?
way of framing the question, as that would take lot of time, especially for MCQ questions. This is just to make sure we prepare it up. AI based, what you are thinking AI based framing? Suppose मान लेते हैं कि कोई क्वेश्चन आया आपका AI बेस्ड फ्रेमिंग पे आया, अगर वो प्रॉपर आपके फैक्ट्स दे रहा है, ठीक है, नाउ इट्स अ टाइम फॉर AI. आई एम नॉट डिनाइंग कि दे कैन नॉट फ्रेम द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन AI. इट अल्टीमेटली विल बी योर टैक्सेशन पेपर ओनली ना, डायरेक्ट टैक्स के पेपर रहेगा. इफ इट इज AI आल्सो, इट वुड बी डायरेक्ट टैक्स पेपर ओनली. वो आपकी टेस्टिंग AI की चीजों की नहीं करेगा, डायरेक्ट टैक्स की चीजों की करेगा. आपको फैक्ट्स दिए हुए हैं, आपको प्रोविजंस तो यही अप्लाई करने हैं ना उन फैक्ट्स पे. तो हाउ डज इट मेक एनी डिफरेंस? It is possible some information is given which is not relevant for you. मैंने क्या कहा, अगर MCQ based question आता है, case scenario based question आता है, just go through it. It is possible कि some information is not relevant at all for you for while answering your MCQ segment. But you have to identify the relevant information. For that you have to read the whole case scenario once thoroughly. एक बार तो पढ़ना ही है ठीक से, so that you should not miss something. It's very essential for you. आपने एमसीक्यू उठाया, यू जस्ट उस नेम पे गए एंड जस्ट लुकिंग फॉर दैट इंफॉर्मेशन, इन दैट दैट वे इट्स पॉसिबल कि यू विल मिस समथिंग. सो एक बार रीड करो, फिर एमसीक्यूज पे आओ, फिर अगेन फैक्ट्स पे जाओ, तो माइंड में रहता है कहीं ना कहीं. सो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी एआई बेस्ड क्वेश्चन से चेंज नहीं होगी आपकी, ठीक है. एआई बेस्ड क्वेश्चन आए, योर डीटीपी ओनली, वो आपका डायरेक्ट टैक्स का पेपर डायरेक्ट टैक्स का ही रहेगा. प्रोविजंस की टेस्टिंग रहेगी. आंसर्स जैसे आप करते हो वैसे ही करोगे. क्वेश्चंस की फ्रेमिंग एआई से बनवाओ या मैनुअली खुद बनाओ, इट विल नॉट चेंज. ओके. सो रोशनी, वुड यू लाइक टू आस्क समथिंग? Yes, ma'am. Ma'am, what could be the best strategy for scoring exemption in DT, ma'am? DT is तो नाउ वेरी 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 स्कोरिंग. आपने अगर प्रैक्टिस ठीक से करी है, इफ यू हैव सॉल्व द केस सिनेरियो बुकलेट प्रॉपरली, और फोर केस सिनेरियोज और 4 से ज्यादा शायद उसमें होंगे, एमटीपी बुकलेट्स में होंगे. पुराने भी आप कर सकते हो अगर आपने अमेंडमेंट्स माइंड में है, दैट यू कैन डू डेफिनेटली. और व्हाट यू हैव टू डू ना, मैंने थोड़ा स्ट्रेटेजी आपको बताया कि आप थोड़ा सेक्शन वाइज यू कैन रिवाइज द थिंग्स, सो दैट आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि मेरे को पता है कि मैंने ये वाले सेक्शंस और ये वाले चैप्टर्स आई हैव गॉन थ्रू, इसमें मेरे को किसी भी फॉर्म में क्वेश्चंस आएंगे, आई विल स्कोर गुड. मुझे पता है कि मैंने, है ना, सेक्शन 3 जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल मैं सेक्शन 3 से स्टार्ट किया प्रिपरेशन, अपनी रिवीजन कर रही हूँ मैं. प्रिपरेशन के लिए मैं कभी भी नहीं बोलती कि आप डेफिनेटली आपको एक सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा. वंस तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा सारी चीज, वंस और ट्वाइस. बट थर्ड टाइम आप रिवीजन स्ट्रेटेजी में हो तो आप सेक्शन 3 से स्टार्ट कर लो. यू कैन स्टार्ट विद सेक्शन 3. मेरे को पता है 4 चैप्टर्स हैं. 4 चैप्टर्स में से नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन, ट्रांसफर प्राइसिंग, एडवांस रूलिंग, डीटीए, एवरी टाइम वन और द अदर क्वेश्चंस आर देयर. लास्ट के 4 चैप्टर्स है, मुझे पता है कि मैंने एक बार पढ़ चुके हैं. नाउ यू कैन टेक द हेल्प ऑफ सारांश टू रिवाइज दोस, बिकॉज उसमें एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आता है, वहां से उसकी प्रिपरेशन आप वहां से कर सकते हो. अदर चीजों की, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप देखोगे ना नॉन रेजिडेंट के लिए विच ऑल प्रोविजंस आर वेरी वेरी रिलेवेंट. 115A इज वेरी रिलेवेंट, है ना. प्रिजम्पटिव प्रोविजंस है उनके लिए. वहां पे बच्चे व्हाट दे डू ना, इफ आई टेल यू कि दे जस्ट जो प्रिजम्पटिव इनकम आती है उसी को टैक्स मानते हैं. That is not your tax. If it is asking you to compute the tax, you have to first compute by applying that whatever be the rate, 7.5% की rate है presumptive income की, or it is 10% or 5%, whatever be the rate in the particular section, that you have to apply, or 25%. Now it's a new section, अब 25% भी है, तो वहां पे it is your only presumptive income, not your tax. उस पे आपको टैक्स कंप्यूट करना है. तो ऐसे मिस्टेक्स ना करो, है ना. प्रिजम्पटिव हो गया, 115A हो गया, देन चैप्टर 12A हो गया. अब तो इंडेक्सेशन कहीं पे भी नहीं है. आप चाहे नॉर्मल एलटीसीजी कंप्यूट करो, चाहे वहां पे जाओ. इंडेक्सेशन नॉन रेजिडेंट के लिए तो है ही नहीं, ठीक है. रेजिडेंट के लिए सिर्फ एक जगह रह गया, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए कोई नहीं है. तो 115A कर लिया आपने. ऑफकोर्स रेजिडेंशियल स्टेटस फिर से गो थ्रू करना, बिकॉज आपका हो सकता है फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन जो बना रहे हो आप, फर्स्ट क्वेश्चन आई एम टेलिंग यू, मतलब केस सिनेरियो बुकलेट का रेजिडेंशियल स्टेटस से अगर वो स्टार्ट हुआ और वो आपने रेजिडेंशियल स्टेटस उसको नॉन रेजिडेंट कर दिया, तो सारे क्वेश्चन के आंसर्स गलत हो जाएंगे, और वो था रेजिडेंट. तो इवन दो इट्स अ वेरी रेजिडेंशियल स्टेटस, आपको स्मॉल थिंग है, और जो कि आपकी यू हैव डन एट द इंटरमीडिएट लेवल, इट इज वेरी रिलेवेंट, आपको बिल्कुल एंड स्टेज तक काम आएगा, वो करना ही है. पोएम आया आपका, उसमें पोएम की आपको पता है पैसिव इनकम,
आपका एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया पता होना चाहिए, इस पे क्वेश्चन में भी टेस्टेड। ट्रांजिशन प्रोविजंस पोएम में कैसे लिखते हैं, तो आप ना एक अपने वो बना लो, मैंने यहाँ बोला माइंड मैप बना के रखो। मुझे पता है कि ये एरियाज पे जनरली आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रेसिडेंट। आपकी इनकम होगी किस नेचर की होती है, जनरली रेजिडेंट्स या नॉन रेजिडेंट्स यहाँ पे आते हैं, दे जस्ट प्रोवाइड द सर्विसेज, गेट द इनकम्स। सेक्शन 9 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक Yes, है। ma'am. सेक्शन 9 तो बेसिस है। तो इस तरीके से आप करोगे ना, अपनी स्ट्रैटेजी सेक्शन वाइज कर सकते हो, ठीक है। दैट यू Okay. डू योर स्ट्रैटेजीज, है ना, देन यू डेफिनेटली इट्स वेरी स्कोरिंग नाउ डेज, वेरी स्कोरिंग। आपको हो सकता है कुछ चीज बहुत नहीं आ जाए, फॉर एग्जाम्पल लास्ट टाइम आपका टैक्स ऑडिट का क्वेश्चन था, थोड़ा सा नया था, बच्चों को Yes, थोड़ा ma'am. डिफिकल्ट लगा होगा, थोड़ा डिफिकल्ट, बिकॉज वहां पे आपको फर्स्ट हैंड पे माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज आइडेंटिफाई करना है, वेदर दीज एंटरप्राइजेस आर स्मॉल और माइक्रो, उसके लिए आपको लिमिट से याद करनी पड़ी थी। Yes, फिर ma'am. 43BH तो सबको याद है, बट वो Yes, लिमिट ma'am. से याद नहीं थी। तो ये पॉसिबल है, लेकिन जो याद है आप उसके बेसिस पर सॉल्व करके आओ क्वेश्चन को, डोंट स्कैर अबाउट इट, ओके। Okay, ma'am. डेफिनेटली विल स्कोर वेल, प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा लिख के प्रैक्टिस करो, जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो ना उतना अच्छा है Okay, ना। ma'am. एमसीक्यू सेगमेंट में स्पेसिफिकली आप कंप्यूटेशन है तो प्रॉपर कंप्यूटेशंस करके सॉल्व करो उसको, क्योंकि होता है ना कैलकुलेशंस कहीं पे गलत चली गई तो आप गलती से गलत ऑप्शन चूज करके आ गए, वो Yes, ma'am. नहीं करो, है ना। Okay, ma'am. दिस इज द वे यू कैन, Okay, ma'am. Thank you. ओके। सो these all I have explained you, actually assumption based, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चों को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है क्वेश्चन में सपोज, तो वो कैसे सॉल्व करे उस इन्फॉर्मेशन को। तो आपको थोड़ा सा ना लॉजिकल इन्फॉर्मेशन एजम्पशंस लेनी है, लॉजिकल एजम्पशंस इन द सेंस कि ऐसा ना हो कि नॉन वर्केबल हो जाए आपका क्वेश्चन। आपने ऐसी एजम्पशन ले ली, स्टार्टिंग हुई क्वेश्चन की नॉर्मल है, आपको रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट बताया ही नहीं क्वेश्चन में, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको नॉन रेजिडेंट ट्रीट कर लोगे, यू कैन नॉट एज्यूम कि ही इज अ नॉन रेजिडेंट, इट्स बिकम अनवर्केबल। सो ऐसे assumptions नहीं लेनी है, you have to take the logical assumptions only, and that you have to explicitly mention your answer sheet कि on this assumption you are solving your answers, it is possible, ठीक है। Further, due to ambiguity in the provision, there is a possibility that provision is being tested and for which two views are applicable। तो आप अपना व्यू क्लियरली लिखो कि आपने किस व्यू में लिया है, क्योंकि उसके लिए अभी एक्ट भी क्लियर नहीं है, एक्ट में एम्बिग्यूटी है, इट इज पॉसिबल। तो वो आपको व्यू क्लियरली रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए कि जहां पे एजम्पशन इंफॉर्मेशन मिसिंग है कुछ, वो एजम्पशन बेस्ड होगी, या फिर ड्यू टू द एम्बिग्यूटी इन द प्रोविजन यू आर रिक्वायर्ड टू टेक अ टू व्यूज, देयर आर पॉसिबल ऑफ टू और मोर व्यूज, तो यू जस्ट क्लियरली स्टेट कि ऑन व्हाट रैशनली यू आर फॉलोइंग व्हाट व्यू, दैट इज वेरी एसेंशियल, ठीक है। ये 115 BA very important, BAB of course it's not now, newly companies cannot opt for BAB because it's there is a sunset clause for this BAB. Earlier companies who are already availing BAB, that only for them only this question can be framed, right? And of course there is no then comparison, because comparison हमें कहाँ पे करना होता है 115 BA में, या तो there would be comparison with the normal provisions or with the BA, but BAB के through आपका comparison नहीं होगा, या तो question होगा तो it would be fully based on 115 BAB, there are no major differences, some difference 15% के rates are there, no deduction is available because very low rate na of taxes, so some you will not get any certain deductions also under BAB, no interest deduction you will get under BAB. So these kinds of things you have to just go through it. Abhi generally nahi aa raha hai questions because abhi newly you cannot test it, but already existing companies if they are following, they can they may require you to solve the question as per 115 BAB. AMT provisions, AMT provisions जनरली ऐसा होता है कि क्वेश्चंस में हिडन इन्फॉर्मेशन होती है। अगर आपकी एडजस्टेड बुक प्रॉफिट सिर्फ इंक्रीज 20 लाख से ज्यादा होता है, देन AMT प्रोविजंस आर अट्रैक्टेड, वो आपको क्लियरली नहीं दी होगी। जब भी आपको क्या हो 35 AD की इन्फॉर्मेशन हो, 10A हो, या प्रॉफिट लिंक डिडक्शंस गिवन हो, वहां पे पॉसिबल है, वहां पे पॉसिबल है कि आपका 20 लाख से ज्यादा का बुक प्रॉफिट्स आया, योर एडजस्टेड टोटल इनकम आई, it's possible AMD is applicable, but 115 BAC की बात करोगे, if you talk about BAC, when you are paying tax as per 115 BAC, तो no AMT provisions would be attracted, but normal provisions when you are doing, then AMT provisions would be attracted. आप देखोगे एक MTP में one of the question is there which is based on AMT provisions, there the tax liability under the normal provisions as per AMT is higher, but when you are comparing that AMT liability with the default tax liability, it is lower. So what you will go, you will opt out of the default tax regime. Opt out word is important. Okay, why opt out is saying
because default is default. You need not to opt for it. By default, you have to pay the tax as per the default tax regime, as per 115 BAC. But when for that reason, you have to opt out after the default tax regime. If you are opting out, then you will pay tax as per the normal rate provisions. ठीक है? So अगर क्वेश्चन में बोला है आपको क्लियरली नहीं लिखा हुआ और लिख रहा है कि टू मिनिमाइज द टैक्स लायबिलिटी, then you have to make a comparison between the both. And AMT skip नहीं करना है. AMT का थोड़ा सा रहता है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो क्लिक ही नहीं होता, बिकॉज क्लियरली क्वेश्चन नहीं बता रहा है आपको AMT के लिए. इट इज पॉसिबल. वो बेसिकली आपके केस सिनेरियो बेस्ड और MCQ सेगमेंट में इट मे बी टेस्टेड. और ऑफ कोर्स वन अनदर क्वेश्चन इन डिस्क्रिप्टिव में आल्सो टेस्ट दिस AMT प्रोविजंस. Then this is just a quick revision. I think you can all do this. Table is given in your study material, and you just can take the help of this table to revise this 115 BA, BAB. Then your section 2, if you see section 1 of section, वो मैंने आपको already inform किया कि charitable trust, REITs are very important. REITs में आप देखोगे some of the other questions always there. Investment funds जहाँ पे आपको pass through status है, अब किन cases में किस income के लिए pass through है, and on those income which are passed through to the unit holders, they are taxable in the hands of unit holders. Since they are taxable in the hands of unit holders, TDS is also attracted, and those income TDS is required to be deducted by the rate. Who will deduct the TDS? TDS. So उसके लिए different sections are there. 119.4 LC, LBC something is there. So that you have to go and remember those rates. What are the rates applicable in case of? और non-resident के case में, resident case में, दोनों के case में REIT is required to deduct tax for the incomes which are passed through to the unit holders. Likewise, investment funds में भी है. Certain incomes are passed through. बहुत easy concepts हैं. आप इसको प्रैक्टिस करने के लिए ऑफ कोर्स केस सिनेरियो से आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस, यू कैन डू प्रैक्टिस फॉर रीड्स एंड आप मार्किंग कर लो कि दिस केस सिनेरियोस बेस्ड ऑन दिस इज प्रोविजन. तो जब आप इस तरीके से आपको पढ़ना भी चाहिए व्हेन यू आर डूइंग केस सिनेरियो, तो आप वहां पे मार्किंग कर लो कि दिस इज बेस्ड ऑन दिस प्रोविजंस. तो जब मैं पता है कि मैं आज की डेट में चैरिटेबल ट्रस्ट कर रही हूँ, इफ आई एम डूइंग चैरिटेबल ट्रस्ट की प्रिपरेशन, इफ आई एम डूइंग रीड्स, तो आप उस दिन व्हेन यू आर रिवाइजिंग द प्रोविजंस गो थ्रू एंड सी योर केस सिनेरियो आल्सो बुकलेट. ठीक है, इसी तरीके से आप आरटीपी में भी मार्किंग कर लो. इट विल हेल्प यू टू डू द रिवीजन व्हेन यू आर डूइंग इट. 115 TD बहुत टाइम से नहीं आया है. इट इज पॉसिबल, इट मे बी टेस्टेड. ऐसा नहीं है मैं बोल रही तो वही आएगा, बट चैरिटेबल ट्रस्ट में केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस डेफिनेटली. चैरिटेबल ट्रस्ट पे इस बार तो बहुत ही ज्यादा एम्फेसिस था. इवन केस सिनेरियो जनवरी अटेम्प्ट में केस सिनेरियो भी आपका चैरिटेबल ट्रस्ट से आया था, एंड इवन योर डिस्क्रिप्टिव पोर्शन इज आल्सो इन केस सिनेरियो और दिस चैरिटेबल ट्रस्ट पे था. So it is possible because it's a combined, weightage is given for whole chapter. It is possible. Then आपका equalization levy is not relevant. So please keep in mind it's abolished. Only VDA provisions are there. VDA is one of the, seems to be important provisions. Only one thing, and it may be tested in your full-fledged questions में भी test हो सकता है BDA. है ना, आपके total income में भी one of the transaction is given with respect to BDA, then definitely you have to apply those provisions. और फिर आपका it can be tested in your single 4 mark question may be also be tested. So you have to keep in mind no deduction is available in case of PDA and 30% per rate is there. No rebate is available in respect of BDS. है ना. Then accredited income की बात करो, even though आपकी income exceed नहीं करिए 1 crore accredited income, then also there is a applicability of surcharge, that is a flat rate of 12%. It's not 37% or 12%. It's flat 12%. So accordingly, here the maximum margin rate in 115 TD would be 34.944%. Okay. Then your, of course, section 2. This is vast. Of course, your TDS provisions are very, very important. इसमें amendments हैं, so please revise those rates, है ना, and revise those threshold limits. 2061G, very important amendment है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है. और your other sections, rent when you are paying a rent 50,000 per month हो गई instead of 2,40,000, है ना, तो आप 2,40,000 पे मत जाना, it's 50,000 per month. ठीक है. और भी अदर अमेंडमेंट्स हैं TDS की. इवन केस लॉज भी हैं, ITC का केस लॉ ऑन टिप्स पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन सम केस लॉज. प्लीज गो थ्रू केस लॉ. ये वाले सेगमेंट में केस लॉज जरूर करके जाना, बिकॉज इस सेगमेंट से बेसिकली क्वेश्चंस आपके केस लॉज बेस्ड आते हैं.
अपार्ट फ्रॉम दैट TDS, टैक्स ऑडिट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. टैक्स ऑडिट भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. टैक्स ऑडिट में ऑफ कोर्स यू नीड नॉट टू रिमेंबर द क्लॉज नंबर्स, बट आपको पता होना चाहिए कि किस किस ट्रांजेक्शंस को यू हैव टू रिपोर्ट इन टैक्स ऑडिट, ये पता होना चाहिए. टैक्स ऑडिट इज रिक्वायर्ड और नॉट, सेक्शन 44A भी पता होना चाहिए. 44AD अगर प्रिजम्पटिव में हो तो यू नॉट टू गो फॉर टैक्स ऑडिट इटसेल्फ, फर्स्ट हैंड पे आउट हो जाएगा. सिमिलर क्वेश्चंस आर गिवन. इवन आपको पता होना चाहिए कि आपका 10 crore की लिमिट इज आल्सो देयर provided your cash payments and cash receipts does not exceed this 95%. Okay, that 5% does not exceed that limit. You have to remember कि किस amount पे आपको लगेगी, वो बहुत केयरफुली. पता है ना, आप जब when you are studying it, आप उसको थोड़ा सा समझोगे ना, आपको खुद पता चल जाएगा कि ये वाला पॉइंट है ऐसा, which is really very important. When you are deciding whether 44AB is applicable or not, whether 44 presumptive provisions are applicable or not, this is a very crucial point जो आपको पता होना चाहिए. वो आप हाईलाइट करके रखो, वो आप लिख के रखोगे यार इस पे टेस्ट हो सकता है. वो एनालिसिस जब आप पढ़ोगे ना तो आपको खुद से आएगा, वो आप समझोगे यस, आपको खुद इतना कॉन्फिडेंस फुल होगा, यस दिस इज द सब्जेक्ट विच यू नो आई एम बॉर्न फॉर दिस सब्जेक्ट ओनली, यू विल लाइक इट. सो दिस इज द वे. मिसलेनियस प्रोविजंस ऑफ कोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस. Then section 3, ये मैंने आपको बताया. ब्लैक मनी लॉ पे ऑफ कोर्स आई हैव गिवन वन ऑफ द क्वेश्चंस. ब्लैक मनी लॉ पे आप देखोगे एसएससी की डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ब्लैक मनी लॉ पे बहुत पेनल्टी प्रोविजंस आर आल्सो डिस्कस्ड इन ब्लैक मनी लॉ, दिस आर कवर्ड. एंड देन वैल्यूएशंस आप देखोगे थोड़ा सा कि विच इज यू नो ऑलरेडी बीइंग टैक्स्ड इन इंडिया, सो ऑन दैट बेसिस पे विच इज नॉट टैक्स्ड, द इनकम विच इज नॉट टैक्स्ड उसको प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा. और व्हेन इट कम्स टू द नोटिस ऑफ द असेसिंग ऑफिसर, तो बहुत लिमिटेड स्कोप है. ब्लैक मनी पे पॉसिबल है, एग्जाम में नहीं आया अभी तक, ओनली डिस्क्रिप्टिव तो नहीं आया ब्लैक मनी पे, ओनली आपका एमसीक्यू सेगमेंट में ब्लैक मनी इज टेस्टेड. तो दे मैं आस्क यू, वेरी गुड क्वेश्चंस आर गिवन इन योर स्टडी मटेरियल, गो थ्रू दोज क्वेश्चंस, ठीक है, सो दैट आपका अगर क्वेश्चन आए तो इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू रिमेंबर एंड इजी टू सॉल्व इट. देन एनआर टैक्सेशन आपको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन, ट्रांसफर प्राइसिंग एंड एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन इट. So what do you want? Should we take RTP in this limited time of 20 minutes? Can we take one case scenario? Please raise your hands if you want me to take your RTP question. How many of you done your RTP? Roshni only wants. What about others? Please raise your hands. Please make it more interactive, na? Very good. वेरी गुड, वेरी गुड. सो आप थोड़ा चैट बॉक्स में बताओ आप लोगों ने किस किस ने आरटीपी करी और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने यू वुड एबल टू सॉल्व इट. जस्ट एक बार जस्ट चैट में बताओ, जस्ट टेल मी थ्रू चैट. Very smart, Sandeep. Sandeep is asking me if we are having a doubt on certain section number in TDS, can we quote two sections, 194 IA, 194 IB? Because in MTP2, though the SSC gross receipts exceeds 1 crore, then 194 IA. But at first, 194 IB. See, it's not, I have to check that MTP again. And then definitely please raise your query through your ask your portal query. I will check you and revert you. But it's not. टू प्रोविजंस तो नहीं लगेंगे, सिर्फ ये जो पॉसिबल है जो आप कह रहे हो ना, टू प्रोविजंस को आपको साइमल्टेनियसली हैव टू चेक. वो आपको 194 इसमें एम 194 एम को इन रिलेशन टू योर 194 जे, 194 सी और 194 एच, देयर यू हैव टू चेक दीज टू थिंग्स. अदरवाइज 194 IB, IA और दीज आर डिफरेंट फैक्ट्स पे आर एप्लीकेबल. इट्स नॉट कि वो सेम चीजों पे लग रहा है, ठीक है. 194 IA, IB और योर IC, आई थिंक आप देखो इन प्रोविजंस को. आप ऐसा नहीं है कि आप IA नहीं लग रहा तो IB लगा दोगे. अरे भाई दोनों फैक्ट्स डिफरेंट पे लगता है, दोनों प्रोविजंस डिफरेंट है, ऐसा नहीं होगा. और ये आपकी क्वेरी आई एम प्लीज रेज टू यू नो आस्क योर पोर्टल, मैं आपका कर लूंगी, ठीक है. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. सी डियर स्टूडेंट्स, इसमें कुछ भी प्रेजेंटेशन में ऐसा नहीं था विच आई will give you. Otherwise I will upload on the portal. I will ask the team where to upload this. क्या है PDF of this meeting present shows for studying in for reference ma'am. After meeting RTP still to be completed. Okay. So मैं just एक बार एक RTP का कुछ questions लूंगी. मैं सारे questions I don't want to take because we have to wind up the session by 4 o'clock, है ना. Let me just share
आरटीपी मैं आपको शेयर करती हूँ आरटीपी थ्रू जस्ट अ मिनट. हाँ, मेरे को वेबसाइट से आई हैव टू शेयर विद यू आरटीपी. जस्ट अ मिनट. It's good you were able to solve it first time. इतनी difficult नहीं थी. Frankly speaking, this time RTP is not that difficult. It's new provisions are being tested. थोड़ा amendments भी covered करी थी, but आपने अच्छे से पढ़ा है ना, आप कर लोगे. बहुत easy. इस बार इतनी difficult थी ही नहीं. So करना solve, but आपकी काफी चीजें brush up हो जाएगी, है ना? Science संदीप, you want to ask something? अगर आपकी क्वेरी उससे रिलेटेड है ना 194 IBIA, प्लीज राइट टू मी. आई विल चेक इट वंस, देन ओनली आई विल आंसर यू. सो जुडिशियल अपडेट आप सबने डाउनलोड कर लिया ना? हैव यू ऑल डाउनलोडेड जुडिशियल अपडेट? Those who have not done, please download it. Good. Roshni has done it. Others also please do it. And those who are, viewing through YouTube or other modes, please download the judicial update. And it's some important case laws are there. आप देखोगे उसमें कुछ दिए हैं. आरटीपी देखो, फर्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन बेसिकली नॉन रेजिडेंट के लिए था. It's based on non-resident, and it is based on your, it's, my screen is visible I think, so it's based on your 44 DA and 115A. Basically the full-fledged question यहाँ पे हमने 44 DA, and this interplay between 44 DA and 115A is there in this case scenario. Apart from that, then TDS provisions maybe what we have tested here. We try to test you on the DTA provisions. DTA में मतलब everyone knows कि if DTA are non beneficial, then provisions of DTS are applicable. ठीक है, इनकम टैक्स लॉ नहीं लेगा, सबको पता है ये चीज. बट somehow we tend to skip something, क्योंकि इस क्वेश्चन में आप देखोगे मैंने TDS रेट दिया है, द रेट ऑफ DTA is also given, and इनकम टैक्स रेट you already know it. क्वेश्चंस भी इसके बेस पे हैं, बट उसको आपको कंपेयर करना है. एक इनकम के लिए आपका DTA रेट इज बेनिफिशियल, अनदर इनकम के लिए द इनकम टैक्स रेट इज बेनिफिशियल. So you have to make an analysis कि आपका किस इनकम के लिए what rate is applicable for income tax. ये first analysis, first step is that only. आप देखोगे first question, if you see, first question is just asking you the residential status. और residential status is very easy in this case. Why? Because आप देखोगे residential status में है क्या? What is in the residential status? आपने थोड़ा सा when you are studying it ना, try to make it simple way. If the person is not an Indian citizen, outside है ना, तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, नॉर ही इज एन इंडियन सिटीजन. ओके, इज नॉट एन इंडियन सिटीजन और नॉट अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन. आपके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड वेयर यू विल गो टू 182 days और 60 + 365, दीज टू कंडीशन. वो जो आपका फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट है और अ पर्सन कम्स ऑन अ विजिट है, और वो दीज आर नॉट एप्लीकेबल फॉर यू, राइट? सो व्हाट हैपेंस अ नॉन रेजिडेंट के केस में, व्हाट हैपेंस टू हिम? 182 days और 60 + 365 days. सिंपल, दैट सिंपल. अगर वो इंडियन सिटीजन नहीं है तो, और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन में नहीं है. तो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में इफ यू सी, इट्स रिटन क्लियरली दैट नाइलॉन इज अ सिटीजन ऑफ कंट्री एक्स. क्लियरली लिखा हुआ है. अब उसका विजिट्स दिया हुआ है, कितने टाइम के लिए यहाँ पे विजिट किया था, हर साल की विजिट्स भी दी हुई है. तो यहाँ पे आप देखोगे 365 नहीं हो रहा है यहाँ पे, and he came back on this day. So आपका यहाँ पे he is not satisfy any condition, nor he is satisfy 182 days condition, or neither he is satisfy this 60 days + 365. So he will become non-resident. अब जैसे ही non-resident बना, उसके बाद आपको आना चाहिए माइंड में सेक्शन 9. सेक्शन 9 इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब यहाँ पे he is serving to the Indian clients. If he is serving to the Indian clients and rendering service to the Indian clients, Indian residents, then definitely this is deemed to accrue a rise in India. Clear? Then if it is deemed to accrue a rise in India, it becomes taxable. What next comes to my mind? Your taxability. How it will be taxable? If you see 115A, that's what I am telling you. 115A is very important. जितनी भी income दी हुई है वहां पे, you please see that those incomes. उसके लिए what the other provisions apart from that you have to keep in mind. So 115A, if you see, he is serving to the clients and he is having some
FTS, fee for technical services in India, and he's getting from two clients, Mrs. PQR LLP, and another is XYZ. So what happens to, he is in India and he stayed here in a paying guest house, and he's serving only to Mrs. PQR from this guest house, and the other client clearly no information is given. So if with a person, and it's clearly given in the question that he's having a fixed place of profession in India. If the person is having a fixed place of profession in India, then straightforward you will go to 44DA. 44DA ke accordingly, if you see 44DA, it says if the person is having a fixed place of profession in India, and the PE, we may use the term PE. So in that case, that income would be taxable as per the normal rates. वहां पे आपको कोई specific rates नहीं लगेगा. Or their agreement can be there, okay, and approval is not required. Whereas 115A के लिए, if it is 115A, then you have to check whether the agreement, whatever is entered between the Indian entity or the non-resident person, it's approved by the central government of India or not. That is very essential. If it is not approved, then again you have to come and apply the normal rates. If PE is also not there and it's not approved also, then rates in taxes, rates in forces may then definitely slab rates will be applicable. Payment ke liye slab rates, but in case of TDS, here I'm telling you, this is important one. If the agreement is not approved, one thing, by the central by the government of India, and there is no PE, okay, at what rate the non-resident will pay the tax? What rate? It will be at the slab rates. Okay, individual slab rates will be applicable. Default tax regime, if it's more beneficial, then you can pay the taxes to the default tax regime. If it's not, normal provisions. But here, this is important. अगर आपका TDS provisions लगते हैं, 195 will be attracted in that case. TDS के लिए under section 195 says that for TDS, rate is 30% in case of individual. Whereas if it is a company, rate is 35%. Foreign companies के लिए rate is 35%. Please remember, it's not 40%, our rate is 35%. Last year's salary, but still. ठीक है, यहाँ पे 30% है, which is rates of taxes given in the rates in tax rates in force are given in your schedule. Basically first schedule मैं आपको दी हुई है part 2 में. Those rates, please go through your, अगर आपके पास income tax act नहीं है, don't worry, you just go through the income tax department portal. You will find the income tax act 1961 there as amended by the Finance Act this 2025, or you just go through the Finance Act 25 is also available on the income tax portal. You will see first schedule में, and there you will go, ये common rate है 30% और 35%. अगर TDS deduct होता है, so वो applicable होगा यहाँ पे. But tax की बात करें, when the person is going to pay DA and 115A में, what is the difference? The difference between 115A and 44DA is about the expenditure. If the expenditure is not with respect to that wholly and exclusive for the purpose of rendering the services, that no expenditure is allowable under section 15A, whereas 44DA permits you for the expenditure. Okay? Whereas the reimbursements to the another P, there is certain things. Please go through that again. अगर आप आज ये पढ़ रहे हो तो 44D को you please go through 44DA. एक marking कर दो कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा किस तरह की expenditure allowable है. If the person is paying tax in 44DA, then he has to maintain the books of accounts or he has to get his books of accounts audited also. ठीक है, अगर यही होता, सपोज ऑडिटेड भी होता और ये दिस पर्सन, तो आपके रिटर्न फाइलिंग की डेट्स भी चेंज होती. ये इस तरीके से यू हैव टू लिंक इट. 44DA में है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन रिटर्न फाइलिंग के लिए भी आ जाता सपोज, तो उसकी 44DA की रिटर्न फाइलिंग की डेट्स भी चेंज होती है इफ द पर्सन इज पेइंग टैक्स एज पर 44DA. ओके, इसमें यही टेस्टिंग है. 115A में 20% रेट है, नॉर्मल रेट्स पे लगेगा, 44DA में पे कर रहा है. तो एक इनकम हुई PQR LLP की, which is effectively connected with the PE, so that income will be taxable at the normal rates, and expenditure is also allowable. Whereas in case of FTS from XYZ Limited, no expenditures is allowable and will be taxable at the rate 20%. ठीक है, TDS के टाइम पे ध्यान रखना, please remember, while deducting the tax deducted at source, you have to apply the rate of HEC also, and not only HEC, if surcharge is applicable, the surcharge also. But here, of course, total income, so surcharge ki applicability you have to check it whether surcharge is applicable or not.
both you have to keep in mind. Then make a comparison with the DTA rate. Then only make a comparison with the DTA rate. Okay. और रिटर्न फाइलिंग की एग्जेम्पशन देता है 115A, बट वो एग्जेम्पशन तभी देता है व्हेन योर DTA rate is not lower than your income tax. Okay, there is an exemptions. These people, if having the income only in respect of those which are covered in 115A, you need not to file the return of income. But that income return of income ki exemption is also provided once you have paid the tax as per this act. Okay, not lower than this thing. Then only दोस्तों इस क्वेश्चन में हमने टेस्ट नहीं किया, बट दिस पार्ट कैन ऑल्सो बी टेस्टेड. आई एम टेलिंग यू एक प्रोविजन को किस तरीके से वो टेस्ट कर सकते हैं, वो आप एनालिसिस करके पढ़ो तो आपको इजीली समझ में भी आएगा एंड यू विल फाइंड इट इंटरेस्टिंग ऑल्सो. फिर आया आपका नॉन रेजिडेंट है, सो रेंटल इनकम है लेट आउट प्रॉपर्टी की कंट्री एक्ट में, और इंटरेस्ट है ऑन लोन बोरोड फॉर लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी लोकेटेड इन कंट्री एक्ट. सो this is a non-resident and this income is not in respect of a property situated in India, should not deemed to accrue arise in India, it would not be taxable in his hands. Apart from that, there is an income from mutual funds specified under section 1023D or interest on debentures of Indian company subscribed in foreign currency. Everything is taxable foreign currency में है. अगर foreign currency में नहीं होता, these are the important words. You know, आपको जब 115A की रिवीजन कर रहे हो ना, तो आप ये देखो फॉरेन करेंसी वर्ड लिखा है कि नहीं लिखा. इसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन में देखना पड़ेगा फॉरेन करेंसी है या नहीं है. ओके, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि फॉरेन करेंसी लिखा ही नहीं है क्वेश्चन में, सपोज फॉरेन करेंसी टर्म इज नॉट, तो वहां पे एजम्पशंस, आपको एजम्पशन बेस्ड हो जाएगा क्वेश्चन आपका. फिर आपको वहां पे एजम्पशन लिखनी पड़ेगी, दिस इज एज्यूम कि इट इज इन फॉरेन करेंसी, देन यू हैव टू प्रोसीड एंड सॉल्व द आंसर. ठीक है, अगर दोनों एजम्पशन पॉसिबल है वहां पे आपको दोनों अल्टरनेटिव्स दिखेंगे आपके क्वेश्चंस में. ठीक है, इन दैट वे. सो बोथ दीज इनकम्स, डिविडेंड की आपकी टेस्टिंग कई बार हो जाती है डिस्क्रिप्टिव में भी, कि डिविडेंड इनकम जो होती है नॉन रेजिडेंट की, इट इज टैक्सेबल एट अ फ्लैट रेट ऑफ 20% विदाउट एनी एक्सपेंडिचर. ये आपका स्लैब रेट्स पे नहीं जाता, किसी भी वे में नहीं जाता. ये आपका यहाँ पे इट्स नॉट मेंशन कि वेदर फॉरेन करेंसी में है नहीं है, कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ डिविडेंड इनकम लिखी हुई है. अगर IFSC यूनिट्स के थ्रू है तो आई थिंक रेट इज 10%. सो रिमेंबर दैट रेट. ठीक है, 20% और IFSC वाली है वो क्या रेट है, अकॉर्डिंगली यू हैव टू आंसर. यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको 20% ही लगाना है. ठीक है, देयर इज नो स्लैब रेट्स एंड ऑल. सो आपका जब कंप्यूटेशन करोगे आप टोटल इनकम की टैक्स लायबिलिटी की, इतनी ह्यूज कंप्यूटेशंस इन्वॉल्व है इस क्वेश्चन में. डू दीज कंप्यूटेशंस प्रॉपरली इन अ पर्टिकुलर स्पेस विच यू हैव आइडेंटिफाइड फॉर रफ नोट्स. ठीक है, सिर्फ कैलकुलेटर्स में करोगे कहीं ना कहीं गलती होगी. और सबसे बड़ी बात है, हो सकता है कि आपको ऑप्शंस मैच ही ना करे तो आप फिर से ट्राई करोगे, ट्राई. सो आप उसमें टाइम स्पेंड बहुत ज्यादा कर दोगे. तो बेटर है आप प्रॉपरली लिखो सारी इनकम्स को, उसके बाद टोटल इनकम वर्ड यूज करो, उसके बाद यू कम. एक बार आपने कर लिया, आपके 2-3 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे. समझ रहे हो, सिर्फ एक शॉर्ट में लिखते जाओ कि ये मेरी इनकम है, ये मेरी इनकम है, दिस इज टैक्सेबल एट दिस रेट, नीचे कैलकुलेशंस, देन यू जस्ट ट्राई. ऐसे नहीं है आप क्वेश्चन सिर्फ फैक्ट्स पढ़ते यू कीप ऑन सॉल्विंग द कंपटीशन. नो, डोंट डू इट. आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ना है. फैक्ट्स पढ़ लिए, फिर क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है. हो सकता है क्वेश्चन में आपको टोटल इनकम पूछ ही ना हो, इट्स पॉसिबल. क्वेश्चन सिर्फ आपसे FTS के बारे में ही पूछ रहा है, कुछ पूछ ही नहीं रहा. जरूरत नहीं है आपको क्वेश्चन पूरी फुल फ्लैश क्वेश्चन सॉल्व करने की. ठीक है ना, क्वेश्चंस को भी पढ़ना है. पहले तो एक बार फैक्ट्स को पढ़ना है, यू हैव टू गो थ्रू द फैक्ट्स वंस, देन रीड द क्वेश्चंस, देन ओनली स्टार्ट योर कैलकुलेशंस, देन ओनली स्टार्ट योर आंसर्स. फ्री हैंड नहीं कर देना शुरू. ठीक है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, क्योंकि अननेसेसरी यू विल वेस्ट टाइम इन इट. Then first question is non-resident become, and then total income. I have already informed you किस केस में होगी. टैक्स लायबिलिटी के केस में I told you कि 44DA वाली इनकम किस रेट पे होगी, और क्वेश्चन में लिखा है कि DTA के रेट्स नहीं देने हैं. DTA के रेट्स आर बीइंग टेस्टेड इन क्वेश्चन नंबर 4 ओनली. ठीक है, तो यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी ऑन द इनकम विच इज फ्रॉम PE वुड बी टैक्सेबल एट स्लैब रेट्स, एंड द पर्सन इज पेइंग, नाइलोन इज पेइंग टैक्स एज पर द डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम. डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम की आपको पुराना वाला रेट्स अगर याद है तो फॉरगेट अबाउट दोज रेट्स. नया स्लैब रेट्स आ गया है, प्लीज रिमेंबर दैट न्यू स्लैब रेट्स. ठीक है, और हाँ, BSE के में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है इसके एक्सपेंडिचर के लिए. आपको थोड़ी सी लिमिट ध्यान रखनी, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि यार ये एक्सपेंडिचर अलाउड है या नहीं है BSE में.
तो ये वाली चीजें ना हो, इसलिए आप उनको लिस्ट को याद कर लो, रिमेंबर कि क्या क्या अलाउड है, क्या क्या अलाउड नहीं है, पीजीबीपी में क्या क्या डिसअलाउड है, बस वो लिस्ट आउट कर लो अपने सेक्शंस। अदरवाइज सारे एक्सपेंडिचर अलाउड है। ठीक है, आपका एडिशन डेप्रिसिएशन एक बार लिस्ट जस्ट ब्रश अप कर लो, बहुत छोटी सी लिस्ट है, बहुत बड़ी नहीं है। पीजीबीपी से रिलेटेड 44D है, आपको पता है, इट्स इन पीजीबीपी ओनली। तो आपके पीजीबीपी के केस में कौन सी रेस्ट्रिक्शंस हैं? कैपिटल गेन्स में देखो तो ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी में रेस्ट्रिक्शन है, सैलरी में, सैलरी इज नॉट दैट रिलेवेंट फॉर यू, बट ऑफकोर्स मैं ये नहीं बोलूंगी इट्स नॉट रिलेवेंट। आपको हो सकता है डीटीए वाला क्वेश्चन आ जाए सैलरीज के बेसिस पे, बहुत फुल फ्लेश क्वेश्चन तो नहीं आएगा, आपको बोलेगा परक्विजिट की वैल्यूएशंस करो, नो, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल नॉट बी आस्क्ड। ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वहां पे 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, नॉर्मल प्रोविजंस में 50,000 की डिडक्शन इज अवेलेबल। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। अगर आपको ऑप्शनल में अगर वो ऑप्ट आउट कर लिया है तो आपको 50,000 की डिडक्शन मिलेगी, वहां पे आपको 75,000 की नहीं मिलेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाउस प्रॉपर्टी ऑफ कोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन डिडक्शंस फ्रॉम जीटीआई, सिर्फ तीन ही डिडक्शंस, दो ही डिडक्शंस मिलती है आपकी, एटीजेजे और एटीएम, इसके अलावा कोई डिडक्शंस नहीं मिलती है वहां पे, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड याद हो जाएगा। सो यहाँ पे डोंट फॉरगेट 115 बीएसी लगा रहे हो तो एक्सपेंडिचर इवन दो 44 डीए है फिर भी आपको अलाउड होगा। ठीक है, और नॉर्मल रेट्स का एप्लीकेबल होगा। देन यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है जो विच इज टेस्टिंग यू ऑन द डीटीए प्रोविजंस। बेसिकली डीटीए की थोड़ी टेस्टिंग की है, आपको पता है कि एक इनकम इज टैक्सेबल एट 20%, अनदर इनकम एट द स्लैब रेट्स, बट टीडीएस के लिए रेट्स इन फोर्स में जाना है, स्लैब रेट्स में नहीं जाना है। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि इसकी इनकम 10 लाख की हो रही है तो आप देखोगे तो एवरेज रेट आप करोगे तो एवरेज रेट में तो बहुत कम आएगा, बट टीडीएस की रेट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिकॉज द पर्सन हु इज गोइंग टू डिडक्ट द टीडीएस is not going to deduct the expenditures from the payment which the person is making to you. He will deduct the TDS on the whole sum which is chargeable to tax in India. Okay, whole sum which is paying to you, got it? So on that amount he will deduct it, और वो भी 30% का रेट यहाँ पे एप्लीकेबल है। 30% बिकम हायर देन दिस 25%। वैसे ही फर्स्ट रेट इज हायर है, फिर उस पर आप एजुकेशन सेस भी लगाओ तो वैसे भी ज्यादा हो जाएगा। So PQR LLP will deduct the TDS at the rate 30%, whereas the XYZing it will deduct the TDS at the rate 20%. Simple. ठीक है, this fourth question is then your this is respect to the Nile. Mrs. Nile के लिए some question is there कि some assessment has done on her and what is the remedy available, because it's been passed by the CIT appeals. Once the order is passed by the CIT appeals, then it can definitely not go to the same level of authority. So revision mein to she cannot go for the same, same type of what we can say, same adjustment, or which is the matter of appeal for the particular thing. She cannot go for 264. And question itself is mentioning she cannot file because it's a mistake apparent from the court, so she cannot file. And of course, once it's passed by the CIT appeals, then of course for the same matter you cannot go for 154. Ultimate remedy is just she can file the appeal before the appellate tribunal. So these are very easy things. आपने एक बार भी पढ़ी होगी तो आपको याद आ जाएगी, ऐसा नहीं इतना डिफिकल्ट इसमें नहीं है। फिर आया वन ऑफ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू वेदर मिस्टर नाइलॉन इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स। इज रिक्वायर्ड ऑफ कोर्स। आप अगर यहाँ पे आप देखोगे दिस सेक्शन 194 IB, हियर इट इज 194 IB इज अट्रैक्टेड फॉर रेंटल पेमेंट्स। वो भी 194 I, वो आप जो कह रहे थे 194 I इफ आई रिमेम्बर, वहां पे आपको क्या बोलते हैं, योर टर्नओवर इज टू बी सीन कि आपका total receipts, gross receipts or your turnover is exceeding 1 crore or not, or 50 lakhs in case of individual. But 194 IB आया ही उनके exclusions में, those who are not required to deduct TDS 194 I में are supposed to deduct TDS in these cases. ठीक है, वो भी आप देखोगे individual और HUF, ये नहीं लिखा है कि residents only, non resident are also subjected. मतलब non resident को भी आप अगर पे कर रहा है तो he is also subjected, because he has to of course take the PAN, because he is filing the return of income. And in case of this section, of course, I think 10 is not required. So, of course, he has to deduct. अब यहाँ पे don't confuse, because the deductor who is deducting the payment is a non-resident. तो ऐसा नहीं है कि non-resident हो गया तो उसको cess लगा देना है. No. He will not apply the cess. He will deduct the TDS at the rate of whatever will be the rate given in 194 IB at the rate 2%, है ना, without any cess. So this is all. The second case scenario is also very interesting, and definitely it will,
give a understanding of section 112 जो उन्होंने ग्रैंडफादरिंग की प्रोविजंस दिए हैं ना, ग्रैंडफादरिंग जो उन्होंने इंडिविजुअल रेजिडेंट को बेनिफिट दिया है ओनली इन केस ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, और कहीं पे भी नहीं दिया हुआ, ठीक है, ओनली इन केस ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ये दिया हुआ है कि आप जाके यू कैन टेक द बेनिफिट रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी 112 ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी नॉट रेजिडेंशियल हाउस, इमूवेबल प्रॉपर्टी इज रिटन, ओके, देयर इज अ डिफरेंस, रेजिडेंशियल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी में डिफरेंस है, जस्ट अ मिनट. Being land and building or both, it's written. It's not written any this thing your residential. Don't confuse with that. Commercial property is also possible. Land and building or both is written in that. So वहाँ पे उनको दिया हुआ है. Otherwise you will not get anything. और वो भी आपका total income आप देखो first question में total income ही पूछा है. If you see in the first question, simple पूछा है कि आपको capital gains you have to includable in the total income. अगर आपको simple capital gains की computation if the question is asking, ठीक है, वो भी लैंड एंड बिल्डिंग पे है, देन यू हैव टू कंप्यूट विदाउट इंडेक्सेशन. देयर इज शुड नॉट बी एनी डाउट. अगर क्वेश्चन यहाँ पे सिर्फ कंप्यूट द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन्स पूछता, if the question simply ask you to compute the amount of capital gains arising from transfer of land and building, then you have to compute without indexation. ठीक है, ये जो बेनिफिट है आपका सिर्फ टैक्स लायबिलिटी के टाइम पे है, नॉट at the time of computing on capital gains. Got it? आपका descriptive भी आएगा तो भी आपको यही करना है. Unnecessary, don't waste any time to compute the tax liability and to compute your this thing. Got it? Then capital gains है first question. Then another is total income and tax liability of Mr. Kunal Verma. इसमें जो important question है ना, ये तो it's not that difficult. टोटल इनकम कंप्यूट कर दोगे, आपको पता है शेयर ऑफ प्रॉफिट इज एग्जेम्प्टेड इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर्स एंड द रिमरेशन व्हिच इज अलाउएबल एज डिडक्शन टू अ फर्म इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर्स. दिस इज द ओनली कांसेप्ट इज बीइंग टेस्टेड. प्लस ऑफ कोर्स आपको टैक्स लायबिलिटी थोड़ा ध्यान से कंप्यूट करनी है यहाँ पे, क्योंकि आपको डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम में 35 लाख पे यू हैव टू कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी एंड ऑफ कोर्स ऑन द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स दैट यू हैव ऑलरेडी कंप्यूटेड व्हाइल डूइंग दिस थिंग. Seventh question that you have already arrived at and now you have to just determine the 35 lakh. Of course, यहाँ पे the trick is with respect to surcharge. आप देखोगे आपको माइंड में क्लिक नहीं करेगा थोड़ा सा सरचार्ज का, तो सरचार्ज भी लगेगा वही 15% से, बिकॉज आपकी टोटल इनकम इज एक्सीडिंग 1 करोड़. ठीक है, सो दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट. और थोड़ा सा मतलब यू कैन वेस्ट टाइम, क्योंकि आपका आंसर तो डेफिनेटली नहीं मैच करेगा वन और द टू से, बट वाइल अराइविंग एट द करेक्ट आंसर you will spend some time. यहाँ पे TDS की जो रिक्वायरमेंट है, 9th क्वेश्चन इज इंटरेस्टिंग एक्चुअली. थोड़ा यहाँ पे बच्चे कैन स्किप दी 194 IB प्रोविजंस. आप देखोगे यहाँ पे इट्स पॉसिबल यू कैन मिस द 194 IE प्रोविजंस आर पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, he just sold this property and 1,15,000 which is exceeding of 50 lakh rupees, and on that of course 1% TDS is required to be deducted. ठीक है, आपको याद आ जाएगा 194T, you will remember your what else 194T and then of course 206(1G, क्योंकि आपको पता है ओवरसीज टूर पैकेज लिखा हो तो आपको वो भी याद आ जाएगा. यहाँ पे पॉसिबल है क्लोज ऑप्शंस क्या होंगे डेफिनेटली, कि बच्चा कहाँ मिस कर सकते हैं 194IA में, वो दैट यू कैन मिस. ठीक, अब 194IA इज डिफरेंट. 194IA यहाँ पे क्या लग रहा है, उस पे लग रहा है आपका सेल ऑफ ट्रांसफर ऑफ अ प्रॉपर्टी, नॉट ऑन रेंटल इनकम. सो आप ऐसा नहीं है कि आप इधर उधर सेक्शंस मेंशन करके आ जाओगे. ठीक है, फिर अनदर क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. 143(1) का है, गो थ्रू 143(1) कि व्हाट ऑल एडजस्टमेंट कैन बी मेड. आपके TCS और एक्चुअली फॉर्म 26AS के बेसिस पे आपकी एडजस्टमेंट्स कैन नॉट बी मेड अंडर 143(1). एंड द अनदर 11th क्वेश्चन आप देखोगे, 11th क्वेश्चन आपने हो सकता है कर लिया हो, बट इट इज बेस्ड ऑन अ केस लॉ जो कि आपका जुडिशियल अपडेट में कवर है. वहां पे द कैलकाटा हाई कोर्ट इज सेइंग कि ठीक है, you forgot to claim in the revised return, okay, it's okay, but still the CIT has to give the they cannot deny for the deductions or whatever the rate applicable, so they cannot deny for it. If the TCS is eligible, he is eligible to claim the tax credit for the TCS, definitely he can do it.
So this is based on that, high court ruling. So it's not कि आपके case scenario में आया है, तो it may be asked in the form of your descriptive. There, of course, you have to do the analysis. You have to apply the provisions and mention the provision, and then accordingly conclude your answers. Then this is your question number 11. Then 12 is independent question. It's very easy, where the 115 BA. It's about the how the assessment has to be done where there is a search cases. Search cases में assessment किस तरीके से किया जाएगा. So this is about that part. I hope please do solve it. जिसने नहीं करी है, who have not done it, do it properly. और जब when you are doing it now, whatever with the sections are relevant, are attracting in these cases, वो तो आप revise कर लो. ठीक है, go through those sections अच्छे से. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ restrict to these MCQs. What all can be asked? थोड़ा analysis you have to do in your minds, and then approach, revising these questions. So I think now time, let me take you, stop sharing, and let me take in case some query. Methods, it's not easy to do choose the methods. Methods के लिए बहुत वो है, but up to the point आप एक बार देख लो. क्वेश्चन वैसे जनरली लिखा होता है कि आप किस मेथड पे सॉल्व करना है. जनरली आपके लिए क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा कि ऑन व्हाट मेथड यू हैव टू कंप्यूट द ALP. बट आप देखोगे आपकी बुक में, स्टडी मटेरियल में, हमने स्मार्ट आर्ट्स के थ्रू हमने समझाया है कि ये मेथड कब लगेगा, व्हेन इट विल एप्लीकेबल. तो थोड़ा की पॉइंटर्स आप रिमेंबर करो कि मेथड कब लेगा. रीसेल है तो आप रीसेल प्राइस मेथड है तो ऑफ कोर्स जब व्हेन यू आर परचेसिंग एंड रीसेलिंग टू अनदर पर्सन, देन यू विल अप्लाई. अनकंट्रोल्ड कप मेथड है, कॉस्ट अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन है, तो वो आपका जनरली आप किसी ऐसी पार्टी को, अनरिलेटेड पार्टी को सेल कर रहे हो, उसके बाद दूसरी ट्रांजेक्शन आप ए को कर रहे हो, तो वहां पे आपके पास और कोई मेथड ही नहीं है. दैट प्रॉफिट स्प्लिट, जब आपके पास दो चीजों में आपको चीजों को स्प्लिट अप करना होता है. तो मैं ऐसा नहीं है आई एम रिमेम्बरिंग एवरीथिंग. ऑफ कोर्स यू हैव टू गो थ्रू, आई आल्सो हैव टू गो थ्रू टू दोस थिंग्स टू एक्सप्लेन यू. सो आप एक बार वहां से गो थ्रू करो. ठीक है, गो थ्रू द स्टडी मटेरियल. बहुत की पॉइंटर्स ही दिए, बहुत डिटेल में, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनालिसिस. आप प्रैक्टिकली देखोगे मेथड्स चूज करना इज नॉट that easy. You have to do a lot of research. You have to make a lot of comparisons. There are so analytical reports are there. On that basis, you apply the method. But for you people, simple pointers are given in your study material. Remember those things. उन lines पे तो आपको वही method apply करना है. ठीक है? In that way you can do. So I hope any other query, or we shall wind up the session now. Can we do upload this PPT, Ajit? Can we upload it? Okay, we will upload these PPTs. ठीक है, you can कहाँ पे where we will do? हाँ, जो आपका you have to register yourself BoS access या LVC portion में we can do. LVC में we will do. So LVC notes are there ना, there we will upload these PPTs. And you can refer it, of course, and it's nothing majorly given आपको, but of course some strategy of course you can make through these things. I hope you find this session useful, dear students, and really wishing you all the very best to you for having a great success in your incoming examinations, and you will all become future chartered accountants, and definitely a very successful chartered accountants, right? But just take care of your health. Don't unnecessarily take pressures. Just take care of your health. Definitely, you have done it. क्वेश्चन को पेपर को देख के एकदम से डोंट unnecessary, don't take pressure. You will definitely gradually, when you start picking up the questions, you will you can solve it when you have prepared well. So do take care of yourself and attempt the paper with full confidence. Wish you all the very best. Thank you so much. We can now wind up the session.